A very good evening, everyone. Hi. Hope I'm audible. Am I? Good evening, Akhil. Tomorrow is Snap and MyCAT exam. Some people messaged me that they won't be able to watch the live, but they will definitely watch the recording. So maybe we're expecting some low attendance now. Okay, who all are there? Hey, Aditya. You're the first person, right? Good evening, Ankit. All right. All right then. Chalo. Let's start solving it. अंकित हाँ मंडे से कैमरा ऑन होगा ओके okay Aditya, so we started now. That quant linear and Diophantine equations. We're solving 50 high yield practice questions for integral solutions and optimization. This will be a huge session and depends. Okay, chalo. Let's see. So here we have set one, that is basic Diophantine equations and finding number of solutions. Before that, I would like to guide you through some theory that how it actually works. Diophantine, yes, Akhil, I'll tell you. So let's say we have some equation like this. Is this okay to see or should I change it? I think I should change it, right? Let me get a new one, totally blank. Value better. Okay, so here we go. Is my voice lower? Is it for everyone? I think it's at the highest possible volume from my side. Okay, anyways, chalo, let's start. So, see, first thing first, I will start with some basic hacks. Okay, some basic hacks for this. So before going on to solve the equations, I would like you to understand one simple thing. So let's say we have something like this: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. How many terms are there? How many terms are there? Akhil says 8. Did you count it? It's easy to count, right? Everybody can do that. Not a difficult task. What if I write like this? 1, then 4, then 7, then 10, okay, then 13. Goes like this. You get that?
till, let's say, 298. How many terms do we have? How many terms do we have now? A problem हो रही है. Now you can't count. I'm taking you from the very basics so that you know things which were lost, things that you did not understand, and things you partially understood. I'm going through that basics here. 99 terms, 298 by 3. Okay, Aditya. Avi, exactly. Avi got it correctly. So, this is important to be understand the basics of it. I'll tell you something. See what exactly has happened. This is simple, but here the correct way, the best way to solve is if you see the difference. It's basically an arithmetic progression, right? Difference is 3. So just whatever the difference is, just write 3. जो भी difference is 3 लिख दो, उसके k लगा दो. Okay. और k भी नहीं, n लगा दो. N is a better choice. Now, 3n. The problem is, if I put n equal to 1, 3n becomes 3. If I put n equal to 2, 3n becomes 6, and so on. So ideally, if this is the generating function, I would call it the generating function. इसमें 1 2 3 पुट करता हूँ, मुझे 3 6 3 के मल्टीपल मिलते रहेंगे, multiples. But the reality is these numbers are 2 less than the multiples of 3. Yes or no? How do you know that? When you put 1, I get 3. I need 1. This is 2 less. 6. I need 4. 2 less again. So then let's put very simply, let's put minus 2 over here. So 3 and minus 2 is the correct sequence. Is that clear, everyone? All of you? This is how things become pretty easy. Cool. Aditya, did you understand? 3 and minus 2. So essentially, I'll just assume 3 and minus 2 to be equal to 298, the last term, and that's also n is 100. This can be done mentally now. Clear? Is that clear? Akhil, people are saying voice is okay. Maybe you can plug a headphone. See if that helps. Next, one more. What if I write something like this? 3, then I have 7, then I have 11, then I have, let's say, third, what, 15, okay, and so on. And in the end, I get something like 799. Now, how many terms are there? I would like to ask everyone how many terms are there. The voice is low. Still, it's low. Wait, wait. Hello, hello, hello. Okay. Mm, is it fine or still low? डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो वो अलग चीज़ है ना. वो अलग चीज़ है. फिलहाल अभी हमें ये सीखना है. वो हम अलजेब्रा में सीखेंगे. अभी हम प्योर अलजेब्रा में नहीं घुस रहे. अभी मैं वो सिखा रहा हूँ किस तरीके से जो आज का क्वेश्चन, आज की एक्सरसाइज है, उसमें बहुत काम की चीज़ें है. डिफरेंस इज 4. सो लेट्स राइट 4n, एंड बिकॉज इट इज 1 लेस, 4n minus 1 must be equal to 799, and we got the answer. N is 100. There are 100 terms. All of us understand that pretty well. Not an issue. Cool. Now let's jump on to the today's agenda, and the agenda is understanding what a Diophantine equation is. It's essentially linear equation only. Diophantine equations are those in which the number of solutions you cannot you basically. Okay, all of us understand one thing. Let's say I have an equation 2x plus 3y is equal to 5. If I ask you what is the value of x and y,
there'll be infinite values. But moment I say 3x plus 4y is equal to 7, now we have got two equations. You can solve them easily. Two ways of solving it is, one is substitution. Just substitute the value and solve it. Let's say you want to find the value of x. You need to write y in terms of x. From first equation, I can write y is equal to 5 minus 2. What? Okay. I don't know why my Siri is so active these days. So 5 minus 2x upon 3. That is the value that I have obtained from the first equation. I can put this value in the second equation to get the value of x. If someone asks me what is the value of y, in that case, from first equation, I'll write x in terms of y. So 5 minus 3y, all right, upon 2 is the value of x. Let's put it here and get the answer. All of us understand that that is substitution. The other way is elimination, right? In elimination, we tend to eliminate things I don't want. For example, in this, if I want to, obtain the value of x, let's say, this is first, this is second equation. I need x. I don't need y. So I see the coefficient of y here is 3, here is 4. If the coefficients are similar, I could have subtracted, right? So what I'll do, I'll multiply 4 with equation number 1 and then subtract equation number 2 after multiplying it with 3, right? The moment I do it, what happens? The coefficient of y becomes 12 in both the cases, right? So 4 twos are 8, 8x minus 3 threes are 9, 9x is equal to 4 into 5, that is 20, right? 3 into 7 is 21. So I get minus x is equal to minus 1. That means x is equal to 1. Is that clear? Now, these things should be done mentally, the way I did it. Don't have to actually write and then multiply by this and then subtract. It's not a board examination. You don't have to show all these steps. Is that clear, everyone? So these are things. Now, if if I just give you one equation, if I ask you, okay, this equation, right, 2x plus 3y is equal to 120. Now what? What's the value of x and y? There can be multiple such values, right? Multiple values. Out of which we can see clearly the first value, one value is if I write x as, let's say, 60 and y as 0, it is satisfactory, isn't it? It satisfies. Now, what's going to happen is what I need you to tell, I need to tell you the value of x. So here, let's say there's a condition. I want whole solutions, whole number solutions. Okay. That means 0 and all the positive integers. So if I took y as 0, there's one thing for sure, y cannot be less than 0 in any condition. Is that right? I cannot have y less than 0. The next value of y must be greater than 0, right? And the next value of x must be lesser than 60. Can I say that? It will automatically become lesser than 60. Why? Because if you keep on increasing y, x will definitely decrease. That is kind of commonsensical. Now, the thing is, the value of y will increase by the coefficient of x, that is 2. And the value of x will decrease by the coefficient of y, that is 3. All right, so let's see that. If I increase 0, this by 2, I get 2 here, you get 57. 57 and 2. Is that actually solution? Let's verify it. 2x, 2 into 57, plus 3 into 2. What do I get? I get 114 plus 6. Wow, that is 120. So it's totally verified. We are happy, right? So this is always going to happen. I keep on doing it. I keep on doing it. I'll not, that is 54, then I'll have 4. So if I wanted to find the whole number solutions, that'll be really stupid of me to write all the numbers like this because we don't have that kind of time. Then what is the smart way? The smart way is to, because we have identified the pattern already, X, if I want to, kind of create the same way, I want to create something. I want to create this, what? Uh, this generating function like this. Okay, what I'll do, I can definitely see that this is nothing but multiples of 3. 3 times n, if I put 3 times n, 3 times n, then 3 ones are 3 and 3 20s are 60. That is kind of, you can see, right? Right? Is that clear? Right? So 3n is 60. If I assume this, 3 is 60 because that is actually 3n. So n becomes 20. Now, here, there's one more thing that x will actually reach the value 0.
will actually reach the value 0. I don't care about the value of y, right? Because I need the number of solutions. Why do I need to? Because for every value of x, there has to be value of y, right? So if I calculate only x, my life is sorted. 20 are those values, but this is also value which we tend to forget. So as we know, 0 is also a multiple of 3. 0 is essentially multiple of everything, right? Because 3 into 0 is 0. All right. So we'll be having 20 plus 1, that is 21 terms. Is that clear? 21 solutions. 21 whole number solutions. Is that right? Understood, everyone? In the same case, if I want to discuss about the natural number solutions, or I can say natural solutions, what will it be? The first and the last will get cancelled out. We'll be having 21 minus 2, that is 19 solutions. All right. Looks good. All of you? No confusion at all? Perfect. It's perfect. Now, what's what can be Ankit, हाँ, एक और example देता हूँ. What can be the problem? Let me give one more example. Let's say we have 3x plus 7y is equal to 210. Okay. Now what I'll do, I need the whole number solutions. I need the natural also. There are two parts of the question. One is whole, other is natural. So x and y, if I try to write, I can see that 3 into 70 is 210. So if x is 70, y is 0. Wow, I got the first solution, right? Now, now the value of x must decrease by the coefficient of y, and the value of y must increase with coefficient of x. By the way, this is something which you don't really care about. Okay, because why we don't care about it? Because x is decreasing, so x has actually got a limiting factor. X cannot go beyond 0, but y can go on increasing. Y can keep on increasing. It can be positive, right? Whole solutions is the minimum value 0, so I will be happy solving this part and not this part. Do you understand that? The 70 कम होता जा रहा है. So this is 7 into, what is 70 essentially? It is 7 to 10, right? That means 10 terms are there. And in the end, 7 into 0 will also be the term, last term. So overall, 10 to 0, there are 11 multiples of 7 including 0. The answer is 11 solutions. Is that clear, Ankit? पहला 70,0 हो गया. दूसरा क्या हो जाएगा? इसको 7 कम करो, 63. इसको 3 बढ़ा दो, 3 हो जाएगा. फिर क्या होगा? 7 कम 3 ज्यादा, 7 कम 3 ज्यादा करते रहो. इन दी एंड एक टाइम ऐसा आएगा 7 7 कम होते होते 0 बन जाएगा. इज दैट राइट? और ये तुम्हारा 30 बन जाएगा. In case you want to find out, right? This is what is going to happen. But this is the whole solution. Natural will be 2 less, क्योंकि ये पहला 0 वाला केस नहीं होगा, यहाँ वाला केस नहीं होगा. So we'll be having 9 different solutions. Is this clear to everyone? No doubt. Now, this question is simple, but life is not. So, what if the right equation like this, 3x plus 5y is equal to, let's say, 144. Now, the problem here is that we 5 is not a multiple of 144, factor of 144. That is the main problem. So, but x is a multiple of 144. 3 is a factor, not multiple, right? 144 is a multiple of 3, but not of 5, which means y can assume the value 0 and x can assume 48. But x cannot assume 0 here. Do you understand? Yes or no? X can't be 0, guys. If x is 0, then y has to be 144 by 5, which is a fraction, not a proper integer. And I need whole solutions, right? So the same way, this is gonna decrease by the coefficient of y, that is -5. This will be increasing by coefficient of x, that is 3. If I keep on doing it, so how many solutions do I make in the end? Now here, things can be kind of difficult because you don't know what's the limiting value, or do you? So 5. So if I write 5 times, let's say n, 5 times n, then we're not really sure that this will actually go to 5 or actually go to 0. We're not really sure. So what needs to be done? In this case, now, listen very carefully. In such cases, you need to start with from the reverse. So it's basically 48 minus 5 times k should be greater than or equal to 0. Is that clear? All of you got that?
So these are the ways to actually calculate the number of terms which I am totally focusing upon before going on to the real questions. Is that clear, everyone? So what does that mean? That 48 is greater than or equal to 5k, or I can say k is less than or equal to 5, 9.6. 9.6, obviously 0.6 would not be taken care of. We need 9. So k is 9. Is that the thing? K is not 9. You know why? Because 48 also is one of the solutions. This is the problem that people can commit silly mistakes here. So because here k starts at 0. K starts at 0, not at 1. Because if you put k as 0, you get the first term. So answer is 10, not 9. Clear? All of you got that? But if someone asks you how many natural solutions are there, natural, what are you gonna do? Natural. So he will subtract only 1, that is 9. In the previous case, you're subtracting 2, you will subtract only 1. Why? Because this guy x can never be 0. So you will subtract only the first one where y was 0 but x cannot be 0. That's why we subtract only one case. So to make it simple, if all of you noted that, tell me noted, then I'll move on to the next one. Is that done? Understood? All of you? Be quick, tell me in the comments. Yeah, guys, tell me. Noted. Only one person is noting it down. So to make things simple, what I can do, if there exists an equation which looks like this, ax plus by is equal to some kind of constant, that is, let's say k, hmm, then there are there are two cases that we discussed. Case one, a and b are factors of k, right? Right? So whatever the value of whole number of whole solutions was, the number of natural solutions will be 2 less. Can I say that? Yes or no? I can say that, right? जो भी ऊपर आएगा यहाँ से ये दो कम हो जाएगा क्या, है ना? हो जाएगा. Okay. Now, having said that, let me make it, kind of formulaic, because now we have understood certain things. So essentially, x and y both are changing by each other's coefficients. So what it actually is, k divided by a multiplied by b, all right, plus 1. And because natural will be 2 less, so k divided by a into b minus 1. And that is the shortcut approach. That is the second hack of today's session. Just note this down. Now you'll say that why is it happening? Why is this happening? How come this hack? The hack is simple. See, k k was a multiple of both a and b. So if I divide k by a, I will get all those multiples, which were essentially the multiples of a. Do you get that? Divide k by a, I'll get all the multiples of a. And among the multiples of A, there have to be some multiples of B as well. That is why when K by A is divided by B, we got K by AB, right? All right. And plus 1, because at one point of time, X or Y both become 0. And minus 1, because that one case has to be, those two cases have to be subtracted. Is that clear? Now, we can also have another case, which I just discussed. And that case is in this, either A or B, but not both, are factors of K. Now you are thinking that I have gone crazy, right? Do you think that? If you don't, then you're not thinking hard. And if you do, that means you're thinking.
right? See, these are some basic mathematical things which we need to understand. I said either A or B, but not both. You're thinking okay, either A or B बोल दिया मतलब not both बोलने की जरूरत ही क्या है? Did that question cross your mind once? Either A or B मतलब A और B में कोई एक ही होगा. मैं आगे but not both क्यों लिख रहा हूँ? Who will tell me that? Abhi, you want to tell? Either A or B, but not both. See, this is pure mathematics. If then let's say this set represents A, this represents B. So all the elements that are here, here, and here, we call them A or B, which is nothing but A union B in set theory, right? But here I want this and this. I don't want this. What does that mean? So when you say either A or B, that means things which are both in A and B will also be counted. So we will have to be really sure about this. So whenever someone says either A or B, that means A and B is also a part. This is pure maths. A lot of people do not understand this. Aditya, exactly. All of you did, but not both. In that case, what's going to happen? In that case, you can do one thing. You can just divide K by A multiplied by B and take its floor function, or I can say greatest integer function. Greatest integer function. For obvious reasons, because we'll get something in fraction, and that fractional part has to be avoided at all costs. Is that clear? Now, let me put into perspective by these examples, which we did right now. Here, this example, 3 into 5 is 15. 15, okay, let's see what's going to happen. Let's see. 144 upon 15 and its floor function, that is greatest integer function. 15 nines are 139 point something is what you get, right? Exactly, you get 9.6. Did you see that? How beautiful is this analogy? Such a beautiful thing in mathematics that you probably hadn't noticed earlier. So this is 9, isn't it? But that doesn't give you the solution. You need to add 1 to it, right? You need to add 1 here in case of whole solutions, and you don't need to add anything in case of natural solutions. Does that make sense? Now I'm pretty sure that you guys would never be able to forget this. And after this also, if you do forget, you know what I'm doing these days? Probably you must have noticed that I am also putting in quizzes. I want to make a pedagogy that world is yet to see. I'll make a different kind of pedagogy altogether. Okay, you see this, you attend the live session, you watch the recording, you practice questions in live, then you have quiz to perform. After that, you have area tests and a lot of other things. You need to do each and everything. Okay, so that's done. Now comes, by now you must be realizing that needs to be one more case, the most badass case, and that case when neither A, small a was there, nor B is a factor of K. Yes, Ankit. Right. What needs to be done? So here we need to do something extra. So let's do it by some example. Let's say we have 3x plus 5y, okay, is equal to 917. Okay. What should I take? All right. 1001. This looks good. Yes. Greatest integer. Yeah, absolutely. Now coming to this one. Here, until 71 is a smaller number, so I chose a big number. Now, what we need to do? So listen very carefully. In this case, a lot of people actually, kind of use the shortcut that I just noted above. But you know what? In some cases, that shortcut will go bonkers. It won't be helping. There can be cases
the boundary cases which might be counted. Okay. So having said that, I'll do one then. I'll write y as 1001 minus 3x whole upon 5. Now, the moment I write it, and also write as 1000, 1000 plus 1 plus 1. You understand that? Minus 5x plus 2x. Do you mind that? Looks good. Is that fine? But the thing is, why did I do that? I'm just trying to eliminate all the possibilities which are multiples of 5. This 1000 is a multiple of 5. This minus 5x is a multiple of 5. So basically, all I'm concerned with now is the things which are not the multiples of 5 apparently. That is 1 plus 2x by 5. Is that clear? Do you understand this? At 1000 minus 5x will automatically be cancelled out. The remaining will be 2x plus 1 whole upon 5. And if I want this guy to be a natural number, an integer, whatever, then 1 plus 2x must be a multiple of 5, which is possible when x is 2. This is something which we can do orally, mentally, right? 5 का 5 multiple होता है, तो 1 plus 2 into 2 is 5, right? So we got x as 2. Is that clear? The moment we got x as 2, rest everything remains the way it was earlier. Cool. Hey Surbi, you also here? X here, y here. I got the first multiple, first value of x as 2. The moment I got x as 2, now I can calculate the value of y as well. How? By putting it here, right? So 3 into 2 is 6. All right, plus 5y is equal to 1001. So 1001 minus 6 is 995, and 995 divided by 5 is how much? 5 ones are 5, 5 nines are 45, 5 nines are 45. This happens to be the first possibility. I have minimized x, I have maximized y. Now, rest everything remains the same the way it was. 2, this x is gonna grow by the coefficient of y, that is 5 in this case, and y will be declining by the coefficient of x, that is 3 in this case. Obviously, okay, obviously, this is what we need to take care of. This is something which you don't really care about, right? And I don't need to state the obvious anymore. So all the people who are through this video, I'll assume that you guys have gone through it. You guys know it. From tomorrow, I will not be discussing this again. Okay, you need to be really cautious. So 199 minus 3k needs to be greater than or equal to 0. That's it. Which means k must be less than or equal to 199 by 3. So what do I get? 3 6 are 18, 3 point whatever, 3 3 and so on. So k must be 66. Yeah, but the number solution is 67. Why? Because this is also counted. While doing it, we counted only number of k. Only number of k because k starts at 0 here, right? Do you understand this? Now, 67. In this case, the thing is whole solutions and natural solutions both are the number of whole and number of natural solutions are basically same. Is that clear? No need to subtract or add anything here. All of you got it? If you got it, tell me in the comments. All right, Survi. Office, yeah. Come on, tell me. Right? Now, when I was saying that some people use those formulae and they get stuck, I'll tell you. I'll show you here so that you never get confused in your life ever again. This case 1001 upon 3 into 5. I've seen many people doing it. You know what is going to be 1015? This is going to be 66.7 something.
and you are doomed the moment you use the formula. I've seen many people using the formula. Yes, Akhil, exactly. संचित 67 कैसे आया? 66 तो आ गया ये वाला, पर मैंने ये जो 199 माइनस 3 के लिखा था, ये 199 वाला भी तो काउंट होगा, जो पहला सोल्यूशन सेट था, क्योंकि ये भी एक नेचुरल नंबर है। समझ गए बात को? समझ गए सब लोग? और यही रीजन है कि हम बाद में 1 ऐड करेंगे। समझ गए संचित, अंकित? और ये जो चीज़ नहीं करनी क्यों, समझ में इस तुम्हें इसी एग्जाम्पल से आ गया होगा। कुछ जगहों पे ये काम करता है, नहीं करना है तुम्हें ये, यू हैव टू डू इट लाइक दिस। ऑलराइट, अभी by the way, I have told this earlier also in one of my classes, but then I'm repeating everything from basics, so I hope now you understood. चलो जल्दी से बता दो संचित, समझ में आया कि नहीं आया? संचित देखो, 199 से तीन तीन तुम कम कर रहे हो कितनी बार? के बार। तो के का वैल्यू 66 आ गया, 66 पर कम हुआ है 199 से, पर ये खुद भी तो एक सोल्यूशन है भाई। मतलब यहाँ पे के जो है जीरो से स्टार्ट है, so if you put k as 0 you get 199 is the first solution set. That's why I wrote k starts at 0. Okay, so we got 67, चाहे whole हो चाहे natural, all of you got it? That's so nice. Now what we'll do, we'll solve a few questions. This is Diophantine equations. There are more like that. So this is the Z quant linear and Diophantine equations. Okay, we have done with we're done with theory. Let's go to the questions. Set one, basic Diophantine equations and finding number of solutions. Basic. Okay, let's put this into practice. And I will be giving you, I think 1 minute is sufficient. Here we go. We'll do quick fire of 5 questions in 5 minutes. Okay, I'm going on mute now.
अंकित डायफेंटाइन क्यों बोलते हैं बताऊंगा ये सवाल करने के बाद. Tell me guys, how do you like the presentation? Isn't it beautiful? Looks like some kind of landing page of a website. Looks like a button, question 3, press karo button khul jayega, something like that. I'm going to imbibe these features in my app very soon after that is over so that I get some time. By the way, our tech is sorted. Did you guys check it out? The recordings, the quizzes, and आज मैंने quiz put डाला है उसके अंदर 50 question every after every video. अब किसी ने उतने सवाल कर लिए 50 क्वेश्चंस वहाँ क्लास में 25 कराता हूँ मैं आमतौर पे 25 देन 50 वहाँ 75 एरिया टेस्टिंग इतने सवाल तुम कर भी नहीं पाओगे इतने सवाल दे दूंगा तुम लोग को जितना हो सके करते चले जाओ एंड ऑटोमेटिकली यू विल क्रैक दैट कमिंग टू नेक्स्ट वन. So slowly and steadily the conditions are being changed in the same questions. Conditions are being changed. कभी होल है कभी नेचुरल है कभी x और greater than y है all that stuff. That is how they ask questions to you. All right, so before we go further, let us discuss these 5 questions. कुछ ऐसे हैं जो जरूरत नहीं कोई करने की. Positive integral solutions 3 is a factor of 84, so is 7. Positive and natural पूछ रहा है, so 84 upon 3 into 7 minus 1 is going to be the answer, right? This becomes 3. Cool. Next, non-negative, that means whole solutions. Both are factors. 120 upon 4 into 5 plus 1. This is becomes 7 is the answer. Cool. Next, positive integral solutions. 5 9 से कट रहा है क्या? 4 plus 4 is 8 plus 5 13. No, not really. So 445 upon 5 into 9, and then the floor function is what we need to do over here. They're talking about natural. Don't need to add one or subtract one here, right? So what do we get? 4 4 5 से कट जाएगा. 5 8s are 40 89 9 9 point something. The answer is 9. How cool is this, right? Next, x by natural numbers. How many solutions exist so that such that x is greater than y? Oh, nice. Here we need to kind of actually look at things. X plus y 30 है तो natural है तो x is at max 29, y is 1, this 28 becomes 2. At one point of time this becomes 15 each. 15 each यहीं पे रुकना है. So इससे पहले 16 and 14 रहा होगा. So how many solutions do we have? We can count from here or here. Counting from here is a better way. 1 to 14, we have 14 is as the answer. Is that clear? We have 14 as the answer, not 15. Ankit. Okay, coming to the next one.
2x plus 3y both are greater than 0. That means we're talking about positive solutions. 50 upon 2 into 3 or whole इसका ले लो, ये greatest integer ले लो, float function. 50 upon 6, 8 point something is there, so answer is exactly 8. We don't need to add or subtract anything from here. Got this? Chalo. Next. Now, to make it difficult, I will give you 30 seconds each. Okay, that is how your mind will improve. The moment the clock hits 30 seconds, I'll change the question. 2 questions in a minute, okay? So let's increase difficulty level by reducing the time. Here we go. But for this one, I think you require more time, so I'll give you 30 seconds extra here. Okay, this requires more time. This is the type that I have not told you yet. Okay, but still I want to try it once on your own, then I'll tell the solution. So we have done 3 types. This is the type 4. Okay, we'll discuss this. First, let us discuss the solutions to these 3 problems. I think all of you must have done it right. 3 is a factor, so 123 upon 21. And this is going to be the answer. 21 5s are 26 is 5 is the answer, right? Right? Now, this one. Here we need to do what I told you earlier. So I can write x as 500 minus 15y whole upon 11. Oh, cool. Now what? So 500, 11 ka, है ना? So 495 plus 5 minus 11y minus 4y upon 11. I'm concerned only about this 5 and minus 4y. So 5 minus 4y upon 11 needs to be a multiple of 11, 5 minus 4y. How is it going to be possible? Well, possible somehow if I get 11 or, but here won't get 11, I get minus 11. How if I put y as 4, I get 5 minus 16, that is minus 11. So y is definitely 4. So x and y, I got the first value of y and rest everything remains simple. So this is 4. Is that clear? If I put 4 in place of y, I get 11x plus 60 is equal to 500. That means x is equal to 440 upon 11, which comes out to be 40. So first value of x is 40. Now we can decrease by 15 each. ऐसे ही कर लो 40 minus 15 25 minus 15 is 10. So we got 3 solutions. The answer is 3. Is that clear? For this, we don't have to actually make the entire uh, um, AP, right? Okay, okay, तब समझ में आ गया. चलो अब यहाँ पे आते हैं. This is the type 4. For type 4, let me open my whiteboard. Fourth type of question. See, now you know what all types are there. Type 4. The question was 3x plus 5y is equal to k. Okay. If the number of positive integer solutions is exactly 4, what is the minimum value of k? Positive is exactly 4. संचित दूसरा मेथड कौन सा है? उससे हो ही नहीं पाएगा क्योंकि दोनों ही फैक्टर नहीं थे. ना 11 फैक्टर था ना 15 फैक्टर था, है ना? 500 का. ठीक है ना?
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके 4 सॉल्यूशंस हैं। 4 कौन से सॉल्यूशंस हैं? नेचुरल। 4 positive integral solutions is exactly 4. 4 natural solutions are there. I need to minimize the value of k. Okay, this is very important. So now listen very carefully. I'm going to give you now the next hack, and the next hack is I want to, minimize it. Minimize this. 4 solutions. Tell me something. If I somehow start with x as 1, x as 1, okay, x as 1. अंकित क्या बोल रहे हो? y के टर्म्स में ठीक है, लेकिन वो भी कर दूंगा, अभी कर देता हूँ, ठीक है। x as 1 क्यों लिया मैंने? बिकॉज द लीस्ट, लिसन मी केयरफुली, लीस्ट natural number is equal to 1. I need natural solutions. I put 1 over here. संचित नहीं कर सकते तुम? लेट आए क्या संचित क्लास में? मैंने बोला था केस 3 में ऐसा नहीं कर सकते, और उसका रीजन भी दिया था। इस केस में 3 आ गया होगा, बट एक बहुत से केस होंगे जहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना? 1। तो अब अगला जो होगा ये 5 से बढ़ेगा। 1 + 5 is 6, because x will grow by the coefficient of y. 6 + 5 is 11. 11 + 5 is 16. We got 4 solutions. Okay. Now I'll stop over here. अब y का वैल्यू होना चाहिए, because I need the value of k, right? So y, अब x अगर increase किया है by 5 each, y will decrease by 3 each. Or I can say if I go up, this will increase by 3 each. So start with 1. Why? Because least natural number is 1 only. 1 + 3 is 4 + 3 is 7 + 3 is 10. By the way, you don't need to write all of it. Only one solution set and you get the answer. So 3 into 16 plus 5 into 1. You get 48 plus 5. That is 53 is your answer. Is that clear? Akshat, you wrote 60. I know why you wrote 60, but now you also know that why it doesn't work. तुमने मान के चला 60, इसलिए अक्षर, कि तुमने मान के चला कि k जो है वो मल्टीपल है 3 का भी 5 का भी, है ना अक्षर? ये मान के चल रहे थे तुम, पर तुमने ऐसा क्यों माना? ऐसा नहीं मान सकते, है ना? 53 is not a multiple of neither of 3, neither 3 nor 5, but this is your exact answer. Did you understand that? And this is something which I think you must have liked a lot. Throw some likes, guys. वैसे प्राइवेट है, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं लाइक्स का, बट स्टिल आई वांट टू बी हैप्पी. दिस इज समथिंग न्यू, राइट? द टाइप 4. अंकित, हाँ, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के. सबको समझ में आ गया ये बात? आ गई ये बात? आदित्य, व्हाट इफ का क्या मतलब होता है? हमें नहीं पता ना. के इज अननोन, राइट आदित्य? के इज अननोन. We have to minimize this. We have to minimize this. If we minimize this, then obviously we'll go to 1. Aditya, your question is, kind of really, it's a good question, and that is where people get confused. That how do we know y is 1? We know y is 1 because we need to minimize it, bro. The question says, what's the minimum value of k? है ना? समझ गया आदित्य? अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इसमें बोलता कि 4 naturally 4 whole solutions, तब क्या करते? 4 whole, then what would we have done in that case? If they ask 4 whole solutions, then you'll write x and y and start at 0. So 0 plus 5 plus 5 plus 5, and here 0 plus 3 and whatever. Clear? So you just put it here, 3 into 15 plus 5 into 0, 45 will be the answer if you have 4 whole solutions. Very good. Perfect. काफी हैरान करने वाली बात है ना आदित्य ये जब मैं जानता हूँ, जब लोग इसे देखते हैं तो लोग बोलते हैं अरे यार ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है ना? It becomes so simple that people do not believe it, that this is possible, right? And Aditya, you went through that only, and others also. Tell me, the 15 people who are watching, did you feel that? Huh?
Hilarious, huh? Chalo, let's do. Okay, type 5. Before type 5, let me give you one more example of this. What if the question was like this: 5x plus 7y is equal to k has got exactly 7 natural solutions. Find the minimum value of k. K min is what you need to find. Tell me. Then there'll be type 5 also. In type 5, I'll ask the maximum. What's the value of k max? That can also be a question, right? Chalo, let's solve this one first. Now this has become so simple they can do it mentally also, right, Akshat? 1 put here, 1 plus 7, 8, plus 7, 15, plus 7, 22, right? Plus 7, 29, plus 7, 36, plus 7, 43. रुक जाना है, 4 हो गए, 7 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 43, और y को 1 से स्टार्ट कर दो. Put the value, get the answer. 5 into 43 plus 7 into 1 is going to be the answer. 215 plus 7, 222 is the answer. हाँ हाँ अंकित बताऊंगा, याद है मेरे को. Pretty simple, right? I think a lot of you can do it mentally also. And tell me how who all are present here. Hmm. Cool. Now, in this question, let's say this is the question that we were discussing. 3x plus 5y equal to k. So 3x plus 5y is equal to k has got 4 natural solutions. बताओ मेरे को, what is k max? This is going to be your type 5 problem. I'll discuss all types with you. Yes, actually. K max. So if you kind of understand the mathematics behind it, this will become simple to you. X y K max करना है तो ये 1 से शुरू होगा. No doubt in that. Or do we have any doubt? 1 से शुरू नहीं होगा. शुरू कहाँ से होगा, कौन बताएगा मेरे को? कहाँ शुरू होगा ये? ये शुरू होगा अपने कोफिशिएंट से एक कम से. मैक्सिमाइज करना है, 2 से ऊपर नहीं जा पाओगे वरना जो गैप था वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं. Right? Start with 2. 2, 7 plus 5, 12 plus 5 is 17. And y will start with, एक मिनट, नहीं, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? X will start with 1 less than coefficient of y, no? So 4 plus 5, 9 plus 5, 14 plus 5, 19. और ये शुरू हो जाएगा x के से एक कम से, 2 and so on. So you get 3 into 19 plus 5 into 2, 57 plus 10, 67 is gonna be your answer. Is that clear? Is that cool? So we exactly move to the boundary condition because x grows with the multiple of, with the coefficient of y. Need to maximize. You cannot take 5 because that will that will bleed through the boundary conditions. Okay. अगर ये बात डायरेक्टली सोच नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं. 5 अगर है तो उससे एक कम कर 4 5 को बढ़ा देगा. 5 लोगे तो 5 10 ऐसे हो जाएगा तो वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगा? It will reach a value in which k will be somewhat compromised, and the number of questions that would go beyond 4. Yeah, Ankit, the reason we'll discuss when once you guys are done with the basics and fundamentals, slowly your mind will grow and start thinking. Then when we start algebra properly, we'll discuss this reason as well. Reason में से काफी बता दिया मैंने काफी हद तक. Is that clear, everyone?
क्या सही है गलत है, पहले ये बताओ मेरे को। Is this correct? Yes. You enjoyed this? I think some were verifying. If you want to verify, let's verify it here. See, 3x plus 5y is 67. If you count it, see, अभी रीजन मालूम पड़ जाएगा। अंकित देखो, x और y सॉल्व करते हैं। 1 बढ़ेगा नहीं, छोटा रहेगा। या Aditya, you will understand it now. See, okay, listen me carefully. Let's verify it, and the reason become really obvious. So here the value of x is gonna be 67 minus 5y upon 3. Is that right? Right? Now x can written as 66 plus 1 minus 3y minus 2y whole upon 3. Is that right? Here we are concerned only about 1 minus 2y upon 3. Isn't it? We are concerned about this only. Is that cool? ठीक है, अभी देखना। अभी इसी को मैं करता हूँ y के फॉर्म में, x के फॉर्म में। सो दिस y will be equal to 67 minus 3x whole upon 5. You realize it really well. 65 plus 2 plus 2, right? Minus 5x plus 2x is what we are getting here, right? We're concerned only about what? 2 plus 2x by 5 here, and this is here, isn't it? तो यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितना भी जो भी y के अंदर था, what it was, it was here we had 5, here we had x में 3 था, ये सारी चीजें थी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3 का मल्टीपल कब बन पाएगा? अच्छा, यहाँ पे ना इसको मैं 2 प्लस 2x एक काम और करता हूँ टू मेक इट इवन मोर सिंपलर। आई कैन राइट दिस एज, ठीक है सिंपल ही, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर 5 का मल्टीपल चाहिए मेरे को, तो मैं x को क्या लूंगा? 2 प्लस समथिंग दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ये 5 तो हो नहीं पाएगा, कभी भी 10 हो पाएगा, 10 हो पाएगा। 2 प्लस 8, x विल बी 4, राइट? और यहाँ पे अगर देखो तुम इसको, अगर मैं करना चाहता हूँ तो ये -3 हो पाएगा क्या? पॉजिटिव तो होगा नहीं, बिकॉज इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग y यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। -3 हो पाएगा क्या? हो पाएगा एट y इज इक्वल टू 2। इज दैट राइट? So when we write it in the remainder format, this is called the modulo format, the remainder format. Remainder format में ultimately क्या होता है, जो चीज़ें बची हुई हैं, जो भी चीज़ें बची हुई हैं, जो डिवाइड नहीं हो पा रही हैं, सिर्फ वो बचती हैं। तो 1 minus 2y modulo 3. You understand this function modulo or not? Here we get 2 plus 2x modulo 5, right? Right? तो ये हमें क्यों मिला है? क्योंकि जब 3 से डिवाइड किया गया था इसको, तो ये मेरे पास यहाँ -2 रिमाइंडर बच रहा था। ये कि मतलब 5 से डिवाइड किया गया था तो मेरे पास 2 रिमाइंडर बच रहा था। -2 वो जो यहाँ पे अकोमोडेट हो गया। इफ यू चेंज दिस टू नेगेटिव रिमाइंडर इट विल बी प्रीटी ऑब्वियस। ठीक है, तो एक जो कम वाला वैल्यू था वो हमें यहाँ पहुंच गया है अपने आप ऑटोमेटिकली थ्रू मॉड्यूलो फंक्शन, एंड दैट इज द रीजन। सो दिस इज हाई form of mathematics, pure mathematics. But I think somehow by looking at these two values, it's becoming clear. Yes. अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक काम और कर लेते हैं।
देखो, अगर मान लो मैं इसको एक कम से ना स्टार्ट करके वहीं से स्टार्ट करता, क्या बनता? तो क्या होता? सुनना बात ध्यान से। अगर मान लो मैं थ्री को एक्स को फाइव से स्टार्ट करता और वाई को थ्री से स्टार्ट करता, अगर मैं ऐसा कर देता तो क्या मिलता? थ्री से नहीं, थ्री नीचे से करता ना, यहाँ फाइव से स्टार्ट, थ्री वाज 15, थ्री फाइव्स आर 15, एंड यहाँ क्या मिलता है मेरे को? ये इससे कभी डिवाइड हो ही ना पाता, क्योंकि थ्री एक्स और फाइव वाई, थ्री एंड फाइव, नाइदर ऑफ देम, neither थ्री nor फाइव is a factor of 67. So basically the moment you put x as 5, you are assuming that y, you are assuming automatically that 5 is going to divide 67 completely, which is not possible, right? Aditya, Sanchit, it's clear now. So when you do that, automatically it becomes indivisible. Cool. So what the remainder was, it becomes a fraction. Fraction is basically the remainder that is obtained in modulo function. Now it's clear to all of you. This is a great logic mathematically, but the people who are scared of mathematics, उनके लिए तो बहुत अच्छा hack है. This is a hack which is gonna help you a lot in maximum values. Now, everybody who is there, mark your attendance and tell me if that is clear or not. Great. Interesting stuff, right? Now, this is type 6. Let me see if we have a question like that. No. Okay. Coming to type 6. This is type 6. 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by 12. In fact, in the last, just before CAD, I took a session in which I discussed this also. Right? तो इसे कैसे करना है? सबसे पहले करते हैं बेसिक, हर कोई करता है. We'll write it as x plus y upon xy is equal to 1 by 12. If I cross multiply, I'll get 12x plus 12y minus xy is equal to 0. Right? That's what we're getting. I can take things common now. So here, let me do one thing. Let me take from these two, let's take x common. I'll have 12 minus y, right? Now, my, एक मिनट, इसमें एक प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं, सही है. So my intention is to, kind of get two things to be multiplied to each other. That's my intention. So I need one more 12 minus y. You understand that? So let me do one thing. Here we have 12y. Let me write, and here minus 12. So let me take minus 12 common. If I take minus 12 common and write 12 minus y here, what exactly has happened? I got 12 minus y, I got 12 minus y, but minus 12 and 12, minus 144 is extra. If I introduce minus 144 extra, I need to add that 144 extra. Is that clear? I write here x times 12 minus y minus 12 times 12 minus y. I introduce this 12 minus y for the simple reason that I want to take things common. But when I introduce that, I have I have introduced minus 144. I need to add that as well. ठीक है? तो ये बन जाएगा, if I take 12 minus y common, 12 minus y multiplied by x minus 12 is gonna be minus 144. This looks really weird, isn't it? So let's multiply a whole thing by minus 1. So this becomes y minus 12, this becomes x minus 12, and this becomes 144. Isn't it cool? Ankit, yes. Is that clear, all of you? So now basically what has happened? What has happened? So if I assume, let's say a to be x minus 12 and b to be y minus 12, जरूरत नहीं assume करना, समझाने के लिए assume कर रहा हूँ सिर्फ मैं. मान लिया ऐसा कि बार बार लिखने का ऐसा मन नहीं कर रहा मेरा. तो basically a multiplied by b becomes 144. So essentially this question becomes क्या बन गया question? In how many ways can 144 be represented as a product of two different numbers?
Two numbers. That is the only thing. Differently, two numbers. Where one number is A, other number is B. Do you understand that? So whatever is the value of A that you get, whatever, A will be, X will be 12 more than that. So it's pretty obvious. तो ठीक है, 144 ये कैसे करते हैं पता है सबको? अब तुम ऐसे लिखना शुरू कर दो 1 इंटू 144 2 इंटू 72 तो पागल हो जाओगे. तो पता ही है 144 can be written as 2 to the power 4 into 3 to the power 2. So number of factors are 15. We have 15 factors. Is that right? We have 15 factors. And here 1 by x plus 1 by y, it's not an ordered pair. So essentially, how many do we get? 7 pairs distinct मिलेंगे और 8 मिलेंगे. 8वां मिलेगा जो same हो सकता है. So answer is 8. Is that nice? Is that fine? 15 का half, 15 plus 1 का half. क्योंकि ये perfect square है ना, हमेशा होगा. तो हमें क्या मिल जाएगा? एक नंबर था 1/24 plus 1/24 where x and y both are equal. That is why we got 8 pairs. Is that clear, everyone? Do you understand this? Cool, got it. Now, let me give you one more hack. Another hack. The another hack is if you have 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by k, the answer will always be k square के factors निकाल दो and that will be your answer. जो भी factors आएंगे, let's say the factors are, so number of factors of k square plus 1 whole upon 2 is going to be the answer. If it is if it is not an ordered pair, if it's an ordered pair, then number of factors. That's it. अंकित एक पेयर बना दिया मैंने 1/24 1/24. जब ए और बी दोनों 12 12 हो जाएंगे तो एक्स और वाई 24 24 हो जाएंगे. समझ गए? इज दिस क्लियर गाइस? Clear to everyone? This hack, just remember it. All right, let's start. मुझे लगता है ये तुम्हें अभी नहीं करना चाहिए. डायोफेंटाइन इक्वेशन का पार्ट है. फर्स्ट आई विल डू मॉडुलस देन ओनली. चलो कर लो, बेसिक ही है ये क्वेश्चन, है ना. यू नो व्हाट इज मॉडुलस? एब्सोल्यूट वैल्यू. कर लो. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, हमें वो देखना पड़ेगा. बहुत ज्यादा मॉडुलस की बात इसमें नहीं होगी, सिंपली हो जाएगा. अरे थ्रो यू आर देयर, व्हाई आर यू टॉकिंग? The answer is 40, obviously, yes. So I can have x as 0 and y will be plus 10 or minus 10. If I have x as 1, y will be plus 9 or minus 9 and so on. So basically, for every value of x, we have two values of y. ये तो confirm है. At one point of time, x will be 9, so y will be plus 1 or minus 1. इसका उल्टा भी होगा. When x is minus 1, y will be plus 9 or minus 9.
Is that right? Right? Isn't it? Is that clear? So when x is 0, we got two solutions. When x is let's say 10, वो भी एक होगा, है ना? So we'll be getting when x plus minus 10. So basically four solutions for if x starts from 1 to 9, the four solutions each with minus 1, minus 3. But if x is 1 or 10, with two solutions each. Overall, we'll be having 40 solutions. Cool. Next. Set 2, optimization. Maximizing and minimizing variables. ठीक है? इसे करते हैं. So it's basic. I'm done with theory. I will give you 40 seconds to 1 minute for these, depending on the question difficulty. Let's do this. 10 seconds to go. Time up. Next. 5 seconds to go. Next. Modulus, I haven't uh, taught you yet, but we won't be using extreme concepts of modulus. The only thing that is required here is that outside modulus things become positive, absolute value. That's it. So that is why I'm using these. Okay. Questions. सवाल पिछले वाला ही है, बस थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है ना? We have doing all types of questions that can be made in def and dyne equations. Next.
नेक्स्ट। कोई बात नहीं अंकित, ये 5 सवाल हो गए। नाउ आई टेल यू। Time is about to get over, and I can see nobody has answered a single question. Why is that happening? Chalo, time up. Let's do this. Question 11. A person buys pens at rupees 7, pencils at rupees 5. So let's say he buys X pens and Y pencils. So 7X plus 5Y, total रुपए लगाया उसने, that is 181. Now it becomes a proper equation. Okay, so these questions are important to make you understand why I'm doing it before completing arithmetic. The reason is simple, because arithmetic has got word problems. Percentages are done, SIC, yoga, time, speed, distance, everything has got word problems. So did you understand the flow of classes while linear equations? The reason is simple, because arithmetic involves a lot of algebra, equations to be precise. Okay, maximum number of pens he could have bought. So basically, I need to maximize X here. Is that right? If I want to maximize X, I need to minimize Y. Hmm? I need to minimize Y. So I write X is equal to 181 minus 5Y whole upon 7. Same way. उसके बाद 177 plus 4 minus 7Y plus 2Y upon 7. 177 क्यों लिखा है? मैं क्या कर रहा हूँ ये? 7 ones are 7 twos are 14, 26. Okay, this will be 175 plus 6. Now it's fine. Okay, clear? So, so 175 minus 7y is already divisible. The only thing that is we are concerned with is 6 plus 2y upon 7. To make it completely divisible, what do I need? 7 or 4. Can I make it 7? 6 plus 2y? No. 6 plus 2 is 7 नहीं बन सकता ना, y has to be an integer, y has to be a natural number. Y can be 2. If I put y as 2, I get 6 plus 4. नहीं, अभी भी नहीं हो रहा. What if I put y as, I want to make 14. If I put y as 4, I get 6 plus 8 upon 7 is 2. Now it's fine. Is that clear? तो y का वैल्यू 4 हो गया. कंफर्म हो गया? अंकित समझ में आ गया? y का वैल्यू कम से कम 4 होगा. y कम से कम 4 होगा. If y कम से कम मिल ही गया तो मतलब 7x plus 5 into 4, तो x अपने आप मैक्सिमाइज हो गया. That's all. So x will be equal to 161 upon 7. 23 is the answer. Is that clear? समझ में आ गया? y का मिनिमम वैल्यू 4 मिला, उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन में, तो ऑब्वियसली x का मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा. और जो वो चीज़ें खरीद रहा है बंदा, वो हमेशा नेचुरल, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता. नेचुरल नंबर ओनली. ठीक है. नेक्स्ट, value of x plus y, that is maximum. So 3x plus 8y is equal to 200. We know that. And we can solve it, right? So I can write x is equal to 200 minus 8y whole upon 3, which is 198 plus 2 minus 6y. I can write, minus 9y plus y upon 3. तुम इसे minus 6y minus 2y कर दो. Yes, Ankit. Yeah, minus 9y plus y depends on, what you want to get. मतलब
Negative remainder, positive remainder. That's all. So 2 plus y upon 3 has to be an integer. That means y equal to 1. So y is 1. Now I can make my table. X, y. Y कम से कम 1 होगा. All right. All right. और x क्या हो जाएगा? If we put y as 1, तो 192. X will be 64. And x plus y will be 65. Right. अब ये y बढ़ेगा 3 से और x घटेगा 8 से. अब मुझे एक बात बताओ सब लोग. आगे सुनना एक बार. चलो एक बार दिखा देता हूँ एक बार. ये 4 बन गया. 64 minus 8, 56 बन गया. Now the sum is 60. Do you see this? अगर मैं नहीं और अगर जाऊंगा तो होगा क्या? Ultimately, now all of you listen to me very carefully. This is declining by 8 and this is growing by 3. So every time I go down, x plus y is declining by 5, right? Minus 8 plus 3 minus 5 होता है. 5 5 कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं. तो आंसर is 65. We already have the maximum possible value. Is this clear, everyone? Did you understand the logic behind it? X declines by 8, y grows by 3, so x plus y declines by 5. It declines, doesn't grow. So answer is 65. Is that clear? Is that cool? All of you got that? Next. 5x plus 7y is 353. X, y are positive integers. Minimum possible value of mod of x minus y. Mod of x minus y. ठीक है. क्या 3535 से डिवाइड होता है? नहीं. 7 से होता है? नहीं होता. चलो कोई बात नहीं. So x will be equal to 353 minus 7y. We'll do this so many times that you'll never forget it. 350 plus 3 plus 10y minus 10y plus 3y upon 5. So I'm concerned only with 5 plus 3y by 5. Can I make this 5? No. Can I make this 10? No. I can make this 15? No. Can I make this 20? No. What can I make of it? I can make this 20, right? By putting y as 5. So x, y, let's put the values. Y is 5. Is that clear? 5 होगा. हाँ. कुछ गड़बड़ हुआ है. ये 3 plus 3y है. Oh, I'm so sorry. 3 plus 3y. से ठीक है. So 3 plus 3y. So it should end with, okay. What do I put now? 3 fours are 12. So y will be 4. 3 fours are 12 plus 3 is 15. So if y is 4, all right, if y is 4, 353 minus 28, all right, 335 is what I get. 5 6 are 30, 7 are 35. Clear हो गया? Minimum possible value of x. So minimum मतलब क्या हुआ कि x and y should be as close as possible. Do you understand that? They should be as close as possible. हमारा aim अब यही है कि इसको जितना close करना है कर दो. ठीक है? So x minus y यहाँ लिख लो. Just for sake of understanding the pattern. 63. Now x decreases by 7, y increases by 5. दो दो कम होता जाएगा. दो दो कम होता जाएगा. है ना? ठीक है. ये बन गया 60, ये बन गया 9. जितना पास हो सके उतना अच्छा है. As close as possible. So if I keep on doing it, I'll end up wasting a lot of time. As close as possible. So let me assume, let's say x and y are equal. Let's assume that x and y are equal. इसको a मान लिया तो मिल गया 5a plus 7a. इससे आइडिया मिल जाएगा हमें. Is 353. So 12a is 353, which means a is 12 2s are 24, 12 7s are 84, 27 के आसपास आना चाहिए. है ना? 27 के आसपास आना चाहिए. 27 28, it can be both. So let's see, if I put 27 in the place of x, is it satisfying or not? So 5 into 27 is how much? 135. Do you understand that? I put x as 5. 5 into 7, 27.
Let me erase this. Is that clear? So 7y is equal to 353 minus 27 put किया मैंने minus 135. Is it divisible or not? We need to check it. ठीक है. 218 is not divisible. It's not divisible. So let me keep 28 now. Do you understand that? इसी के आसपास होना चाहिए, 27-28 के आसपास होना चाहिए. दूसरी बात एक ये भी है कि 27-28 के आसपास कौन सा नंबर, अगर ऐसे नहीं मिल रहा, कौन सा नंबर है जो इस पैटर्न में दिखाई दे सकता है. तो 67 minus 7 times something, 7 times let's say k, should be near 27, 28, something like that. We can do that mentally, है ना. तकरीबन 40 कम करना है. So we put k as 5, we put k as 5, I get this. We put k as 6, I get this. कुछ होना चाहिए इसी में से. 32, 25 होना चाहिए. 25, 32 मुझे होना चाहिए. I put 25, let's see. So basically I need to check for, do you understand what I did? पहले मैंने इक्वल अज्यूम किया, तो मालूम पड़ा 27 के आसपास आना चाहिए. फिर मैंने ये पैटर्न देखा, तो मालूम पड़ा 27 के आसपास 25 और 32 है. सो x is 25 और x is 32, यहीं पे हमें मिलेगा. Is that clear, everyone? All of you are getting it? So if x is 25, what will the value of y? Tell me, be quick. 25 पुट करो, तो 125 माइनस हो जाएगा. 353 minus 125 upon 7. यहाँ कितना मिल जाएगा? 353 minus 160 upon 7. Let's see. What do you get? ये बहुत सिंपल सवाल था नहीं है ना, इसमें काफी कुछ करना पड़ रहा है हमें. कितना हो जाएगा? 228 by 7 in the first case. देख लो कितना हो रहा है यार. तो डिवाइड ही नहीं हो रहा. 27 गलत ऑप्शन है क्या? गलत वैल्यू है क्या? इज दैट अ रॉन्ग वैल्यू? 27, ये रॉन्ग वैल्यू है ना. 27 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? यार मैं 27 क्यों लिखा हुआ है? 27 लिखा, कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है. जस्ट चेक इट वंस. व्हाट इज द फॉल्ट हियर? जस्ट डू द कैलकुलेशन एवरीबॉडी. Something is messed up. लेकिन आदित्य, वो तो बात खत्म हो गई ना. यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल लेने से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ा. हम तो यहाँ से कर रहे हैं. ये तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना. 67 से 7-7 कम कर रहा हूँ, जब 25 आ रहा है तो 25 सेटिस्फाई करना चाहिए ना इसको. दैट्स नॉट द रीजन आदित्य. आई एम टेकिंग 25 आदित्य, नॉट 27. सी दैट इज ओके. 27 यहाँ लिखा था, वो ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, बस ऐसे ही था. So why is x as 25 not satisfying? Anybody? तो पहला वैल्यू गलत लिया हम लोगों ने.
32 29 तो नहीं होगा ना अक्षर, 7 से कम होगा ना. इज द फर्स्ट वैल्यू करेक्ट? फर्स्ट वैल्यू इज करेक्ट और नॉट? लेट्स चेक इट आउट. 5 into 67 is how much? 335. And 7 into 4 is how much? 28. तो इसको ऐड करने पे हमारा, हमने पहला वैल्यू गलत ले लिया है. द फर्स्ट वैल्यू इज रॉन्ग ब्रो. द फर्स्ट वैल्यू इज रॉन्ग. ये 353 था, मैंने 363 लिया हुआ है. कोई बात नहीं, वही तो. चलो, नॉट टू वरी, लेट्स डू इट अगेन. We took 363, that is the problem. No worries. ठीक है. So okay. X is equal to 353 minus 7y upon 5. अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो 350 plus 3 minus 5y minus 2y upon 5 is what we have, which means 3 minus 2y upon 5 is the main concern here. तो y 29 है रिएक्शन. अच्छा हाँ, ठीक है, अब कर लो. तो ये हो गया है ना. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. So y is 4, definitely 4. 5x, x and y. So if I put x as 4, y as 4, what do I get? So 5x is equal to 353 minus 28. कितना मिल जाएगा ये? 353 minus 28 is how much? 335 upon 5. 67 is the first. ठीक आ रहा है. आ तो वही रहा है अभी भी. क्या कर रहा हूँ मैं पता है कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ यार, कुछ मैं बहुत गंदा काम कर रहा हूँ. ये 325 होगा क्या मैं कर रहा हूँ यार, फिर से वही कर रहा हूँ मैं. 5 6 30 65 आ रहा है ये. ओके, डन मी. वेल, सो डैम. माइनस है अब ठीक है. देख रहे सिली मिस्टेक मैं भी कर रहा हूँ. एनीवेज, सो नाउ वी नो वी नीड टू बी एज यू नो, इसके आसपास जाना चाहिए हमें. ठीक है, कूल. तो 27 के आसपास होना चाहिए, वो सही था, है ना अक्षत? कौन? आदित्य, है ना, वो सही था, नॉट अ प्रॉब्लम. अब हम कर सकते हैं इसके आसपास. तो 30 कम, अगर 35 कम कर दूंगा तो ये बन जाएगा 30 पहुंच सकता है ये, है ना? दिस कैन बी 30. ब्लेंडर हो गया हाँ. 325 होगा, ठीक है. और ये कितना हो जाएगा? 3 दिन बढ़ के, सी हियर 30 बाई डिक्रीजिंग बाय 30, -1 बार बार हो रहा है तो 5 बार, मतलब 35 कम हो जाएगा. 3 दिन बढ़ रहा है 5 बार, मतलब 15 बढ़ जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा. और करते हैं तो और कम कर दो. -7 23, यहाँ +3 22. दिस इज द केस. आंसर इज 1. ऑल राइट. चेक कर लो. इज दैट क्लियर नाउ? चलो चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है कि नहीं. ये मैंने लिखा है 5 और पढ़ रहा हूँ
पता है क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? मेन प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि ठीक से मैं लिख नहीं रहा हूँ। तुम बस बात समझ गए ना यार, मेन बात तो ये बात समझ जानी चाहिए। क्लियर तो हो गया है ना? हाँ। तो ये अगर 5 पर कम होगा तो 30 हो जाएगा, 5 पर बढ़ जाएगा तो ये 25, 29 हो जाएगा। 5 टाइम्स 5, 7 टाइम्स 5। ऑल राइट। अभी ठीक है कि अभी भी गड़बड़ है? अब ठीक है। आंसर इज 1। हाँ ठीक। x - y इज 1 ओनली। तुम लोग बात सब समझ गए ना? अंकित मॉड का क्या केस है? मिनिमम पॉसिबल कर रहे हैं तब एक से कम क्या ही होगा, अब तो बढ़ ही जाएगा इसके बाद। ये आंसर इज 1। वाह, भारी ब्लंडर हो गया हाँ। उदय, चलो आगे देखते हैं। हाँ समझ गए ना, बस इतना काफी है। आगे देखते हैं। अमित अमित अनिता भाई एप्पल्स एट रुपीज 12 ईच। मान लो इसने एप्पल लिए x, ऑरेंज लिए y, सो 12x प्लस 7y इज 300। ये क्वेश्चन वैसा ही है। मिनिमम टोटल नंबर ऑफ फ्रूट शी बॉट। मिनिमम, मिनिमम। यहाँ पे एक चीज बताओ तुम्हें, 312 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो बल्ले बल्ले हो गई है कि नहीं? 25 टाइम्स। तो x और y अगर मैं लेता हूँ तो x 25, y 0 इज अ सोल्यूशन। लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि ऑरेंज कम से कम उसने एक खरीदा होगा, बट एक सोल्यूशन तो है ही, ये पॉसिबल नहीं है। पर इससे हमें बेस मिल गया आगे बढ़ने का। अब x का वैल्यू साथ साथ कम होता जाएगा, 18, y का 12 12 बढ़ता जाएगा। इज दैट राइट? राइट। 7 और कम हुआ तो 11, 12 बड़े 24, ज़्यादा हो गया ये। सो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स, एक्स प्लस वाई को मिनिमाइज करना है हमें। हियर x प्लस वाई इज 30, हियर इज 35, बढ़ रहा है तो यहीं पे आंसर है, 30 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? मतलब ये चीज 7 से कम हो रही है, 12 से बढ़ रही है, तो +5 +5, x प्लस वाई इज इंक्रीजिंग बाय 5, सो मिनिमम इज 13 ओनली। दैट्स द आंसर। Maximum value of y for which this has a positive integer solution for x. 7x plus 4y is equal to 150. You can just find it out. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y मतलब x को मिनिमाइज करना है, कम से कम x क्या होगा? तो क्या करेंगे? y is equal to 150 minus 7x by 4. If you write that, so you will get 148 plus 2, right? और क्या मिल जाएगा? -6x minus x whole upon 4. So 2 minus x upon 4 is what is our concern, because these two, एक मिनट, -8x plus x कर लो, ठीक है? So what is concerning us now? Only 2 plus x by 4, nothing else. तो x कम से कम 2 होगा। अगर x 2 हो गया तो y क्या बन जाएगा? 34, that is the answer। 34 is the answer। I've already minimized x, x 2 से कम नहीं हो सकता। Is that clear everyone? All right, so x is y is 34, x is 2, x minimized, y maximized। क्या मजा आ गया, बहुत सारे सवाल कर लिए हमने इस तरह के। चलो आगे बढ़ते हैं।
Same kind of question. I want you to tell me the answer quickly. Iska. The ideal way is this 12.4 lakhs, 30,000, ये 0.3 lakhs है, 0.5 lakhs है, 12.4. So I can just write 3x plus 5y is equal to 124. इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा क्योंकि वो जितने भी जीरो है कट जाएंगे, right? So let's say he bought, company bought X machines of type A and Y machines of type B. You don't need to maximize Y, so you need to minimize X. Clear? अब तो इसे ओरली भी कह सकते हैं, इतना बार कर लिया कि मेंटली हो जाएगा, और इतनों ने मेंटली कर भी दिया शायद, है ना? देखो, एक्स को मिनिमाइज करना है, वाई को मैक्सिमाइज, तो ऐसा कुछ होगा ये, दिस कैन बी ए मल्टीपल ऑफ 5 ओनली व्हेन दिस एंड्स एट 0 और 5, व्हिच मींस 3x शुड एंड एट, देखो यहाँ पे अलग टेक्निक बता रहा हूँ मैं, 3x शुड एंड एट 9 और 4. इज दैट राइट? 3 3 आर 9 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 124 माइनस 3 इंटू 3. इससे आंसर आ जाएगा. सो y विल बी 124 minus 10, 115 upon 5. 5 twos are 10, 23 is the answer. All right, Anil. 23 होगा ना रित्रो? 20 क्यों बोल रहे हो? You put 8, no? I know. All of you, did you understand this? What I did? मैं बोल रहा हूँ 3x plus 5y 124 है. अगर मैं चाहता हूँ कि 124 minus 3x ये 5 का मल्टीपल बने, मतलब this should end at 0 or 5, isn't it? At 0 or 5. This will end at 0 if 3x ends at 4. This ends at 5 if 3x ends at 9. 3x ends at 9 when x is 3. So I took x as 3. इससे कम तो हो ही नहीं पाएगा. It will end at 4 if x is 8, which possibly Arithro took. So this will be the wrong one. This is the right one. So we get the answer. All right. चलो, समृद्धि भी यहाँ पे है. नेक्स्ट करते हैं. हर तरह का सवाल कर डाला यार इसमें, देख लो. Such beautiful questions which discuss each and everything. I'm going to set the timer. X, Y need to be maximized. ये सब डायोफेंटाइन इक्वेशंस है. टाइम अप. नेक्स्ट वन. यस अंकित. चलो, अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं दोनों सॉल्व करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने.
16 हो गया। हाँ 13, ओहो, all right, 13x plus 17y is given as 1000. We want to maximize xy. Xy is maximized when what happens? ठीक है. There are multiple ways to solve it. Diophantine equations, which can be done. Other is, I can do one more thing. You know what? यहाँ तक पहुँच गए तो ये भी कर ही लेते हैं. AM is always greater than or equal to GM. Okay? They're equal when both things are equal. So what is AM? Average arithmetic mean. What is geometric mean? Product का square root. So 13x और 17y का जो AM होगा वो ये होगा, ये greater than 13x और 17y के प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा. Is that right? All of you get it? We can do it by this, right? Yes or no? इससे फायदा होगा. So this thing is 1000. So 1000 by 2 is 500, is greater than, इसका square is greater than or equal to 13x into 17y, right? कुछ फायदा होगा इससे? बताओ. So 500 into 500 upon 13 into 17, इससे बड़ा ही होना चाहिए xy. बड़ा या बराबर. Clear? All of you? This is going to be very complex. गंदा सा नंबर है ना? We're not liking this number. So let's go by Diophantine equation only. The things that we have been doing for so long. All right. But one thing is for sure, they will be maximized when they are as close as possible. कितना आ रहा था वैसे वो डिवाइड करने पे जो मुझे मिला था? 500 into 500 upon 13 into 17. Anybody? Please divide it. Tell me. What do you get here? 1131. 1131.22 मिल रहा है ना? हाँ इतना आ रहा है approximately. तो is that a possibility? हो सकता है. ठीक है. तो 1131 अप्रोक्सीमेटली ये कब आएगा जब इन दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है ये हमें देखना पड़ेगा. 3929 इज द मोस्ट क्लोजेस्ट. ओके ठीक है. लेट्स डू दिस. 113131 इसका क्लोजेस्ट 3929 मिल रहा है. कुछ और नहीं मिल रहा है क्या? एंड विच हैज टू इवन सेटिस्फाई दिस थिंग, राइट? दैट इज ऑल्सो अ थिंग which you need to understand. क्वाड्रेटिक बनाऊं तो फायदा नहीं होगा. मैं वैसे ही करता हूँ जैसे, रुको, आई नीड मोर स्पेस हियर. 13x plus 17y is 1000. We know it has to be, the product has to be very close to 1131, right? Something like this. All right. तो ये कहाँ पे मिल सकता है हमें? For that, if I write x as 1000 minus 17y, let's leave a and gm for a while. Let's do it normal way as we were doing. ठीक है? So क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 13 sevens are 91, 13 sixes are 78. This is 1001 minus 1 minus 13y minus 4y upon 13 is what I can write. The value of x, right?
मैंने -1 ले लिया, हाँ हाँ, रेट्रोफैक्टराइज करना पड़ेगा, उससे मिलेगा आसपास। कोई बात नहीं, अभी हमने अलजेब्रा में पूरे तरह से नहीं गए हैं, और बहुत लोग आए हैं नए, तो उनके हिसाब से करते हैं, है ना। सिंपली करते हैं। -1 -4y हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 13। दैट इज पॉसिबल व्हेन y is 3, isn't it? When y is 3 you get -13। तो y का वैल्यू 3 कम से कम हो गया, ये मालूम पड़ गया हमें। चलो बहुत अच्छी बात है। सो x and y, when y is 3, what's the value of x? That is how we can calculate this very quickly। ठीक है, 17 3s are 51, so x will be, if I put y as 3 here, 1000 -51 upon 30। पहला वैल्यू निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 949 upon 13। 13 7s are 91, 73 is what we get, and x is going to decrease by 17 and y is going to increase by 13। Normal Diophantine is what I'm doing। Is that clear? x y मैक्सिमाइज कब होगा? जब ये चीजें as close as possible आ जाएंगी, as close as possible। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लेके जाऊँ, मान लो मैं कोशिश करता हूँ कि 17 अगर कम कर रहा हूँ, मान लो 17 3 बार कम कर दिया, लेट से 3 बार कम किया, 3 बार, 1 2 3rd, तो वो 51 कम हो जाएगा। 73 माइनस 51, व्हाट डू आई गेट? 22, इजंट इट? तो यहाँ 3 बार बढ़ा दिया, तो ये 1 2 39 बढ़ जाएगा। 39 प्लस 3 इज 42। यहाँ पहुंच गया हूँ। इसके एक पहले क्या होगा? 22 प्लस 17 39। यहाँ क्या होगा? 22 प्लस 42 माइनस 13 इज 29। 39 29 22 42, इसी के आसपास आंसर आना चाहिए, इससे करीब हो नहीं सकता। सो 39 एंड 29 द गैप इज 10, 22 42 द गैप इज 20, ऑब्वियसली दिस विल बी द आंसर। सो 39 मल्टीप्लाइड बाय 29। क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोडक्ट बोला था, सोल्यूशन बोला था। 39 29 इज सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? एएमजीएम इनइक्वालिटी को अभी छोड़ दो, जब हम वहां पहुंचेंगे इनइक्वालिटीज तो हम कर लेंगे। फिलहाल जो आज हम कर रहे हैं उसके हिसाब से क्लियर हो गया ऑल ऑफ यू? When the sum is constant, product gets maximized when things are as close as possible। You can even check this out। So whatever we have obtained no here, you can check this out कि मैक्सिमाइज प्रोडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप दोनों ही, बट तो यू कैन चेक फॉर 73 इंटू 3 तो वैसे भी छोटा होगा। 39 मल्टीप्लाइड बाई 29 क्या आ रहा है, एंड 22 मल्टीप्लाइड बाई 42 क्या आ रहा है। इफ यू चेक दिस आउट, यू विल गेट द आंसर। अंकित लास्ट स्टेप ये है कि इनको हमें चेक करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, उसका कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 1131, इसका कितना आएगा बताओ मेरे को? 84 42, इसका 924 आ जाएगा। मैंने मन में ही कर लिया, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। तो बड़ा कौन है? 1131, दैट मीन्स 39 इज द करेक्ट सीक्वेंस। एंड द हैक इज, the simple hack is they have to be as close as possible। If the sum is constant, the product will be maximized, if the numbers are as close as possible। तो 10 से कम तो आ ही नहीं रहा ना, 10 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा था मैंने ये, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई गिवन दिस, ठीक है। सो आई कैन राइट x एज 900 minus 23y whole upon 19। ऑल राइट, ठीक है। 19 से डिवाइड करने पे 900 कितना आता है? रिमाइंडर क्या बचता है? 19 4 और 76, 14 140 137 बचेगा। 7 यहाँ -4y/19। एम आई राइट? जस्ट चेक दिस आउट। आई थिंक आई एम राइट। ऊपर वाले को 19 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, पुटिंग y एज -3। y -3 रखो तब भी हो ही जाएगा ना।
If y is -3, तुम बोलो -3 is not a possible solution, it's okay. Even I say it's not a possible solution क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, but here we get at least one starting value. Do you understand that? इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना? बट दिस इज द वन स्टार्टिंग वैल्यू दैट वी हैव ऑब्टेन्ड. इज दैट क्लियर? 51 - 3 ये हम रिजेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे. तो अब जो x है वो 23 से कम होगा और जो y है वो 19 से बढ़ेगा. -3 + 19 is 16. 51 - 23 is 28. See, now I am playing with numbers just like that. Now I want you guys to tell me whether you are comfortable with this or not. क्योंकि -3 से मेरा आंसर जल्दी आया तो मैंने लिख तो लिया. तो मुझे आई सी इन द एंड ऑल आई विल डू इज आई विल जस्ट सी दिस कि आई एम इंक्रीजिंग दिस बाय डिक्रीजिंग बाय दिस बाय 23, increasing this by 19. So ultimately if I get one possibility, rest everything will fall into place. अंकित स्टार्ट, वही तो बोल रहा हूँ मैं, स्टार्ट नहीं, मैं क्रॉस कर दिया उसको. If I get y as -3, I can write it as a starting point. I won't count it. देखो अल्टीमेटली ये है तो एक स्ट्रेट लाइन ना, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन रही होगी तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह जाएगी. तो मुझे अगर नेगेटिव वाला एक पॉइंट मिल गया तो आगे तो बढ़ा ही दूंगा मैं. 40 मिनट्स? अरे तो क्या बोल रहे हो, ये कहाँ का सोल्यूशन बोल रहे हो? 40 मिन बोल रहे हो? ओके. इज दैट क्लियर नाउ? 28 को और कम कर देते हैं, 23 कम करते हैं, आई गेट 5, है ना? ये 19 से बढ़ जाएगा, 19 से बढ़ जाएगा, आई गेट 35. ओके, इफ आई डू इट मोर, 23 और कम नेगेटिव हो जाएगा, यहीं में रुकना है मेरे को. सो वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज, 28 + 16 which gives me 44 and 5 + 35 which gives me 40. So 40 is the minimum answer. Clear? All of you got that? Interesting, no? मुझे लगता है कि तुम इसके बाद लीनियर इक्वेशन और डायफंटाइन में कुछ बचेगा नहीं. हमने हर तरह के सवाल कर लिए. तुमने जितने सवाल आज तक देखे होंगे सारे के सारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना? नेक्स्ट, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. Is that clear? 15 seconds to go. A student scores 4 marks for a correct answer. Let's say he did C correct answers. X, Y ने C और W मान ले रहा हूँ, तो उसको मार्क्स मिलेंगे 4C - W. Okay, and he scores 130. It's also known that there are 50 questions in total. So C plus W is equal to 50. How many did he get wrong? There's a very basic question, very simple question. तो क्या करोगे इसमें, पता ही तुम्हें. दोनों को ऐड कर दो तो 5C becomes 180, which means C becomes 36. If C is 36, then W is 14. As simple as that. Everybody got it correct. Very good. Next. Timer starts here.
Hmm. A wallet contains only, okay, 15 seconds still left. Similar kind of question. Let's say X notes of 20 and Y notes of 50. If I add that, I'll get 1060. We need to maximize the number of notes. We need to maximize X plus Y. इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है. अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात है कि 20 का ये मल्टीपल है. कौन? 1060. If it's a multiple of 20, what can I do? I can just put in the values. तो y को मैं जीरो ले लेता हूँ, हालांकि जीरो पॉसिबल नहीं है ना, बट इसको मैं जस्ट फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट. सो दिस विल बी 53, राइट? तो ये कम हो जाएगा 50 से, ये बढ़ जाएगा 20 से. सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये 3 8 20. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. तो आंसर इज 23. मैक्सिमम छोड़ दो, मिनिमम भी वही है ना? इफ यू गो बियॉन्ड दिस, x बिकम्स नेगेटिव, राइट? नेक्स्ट, set 3. Now we have three variables and word problems. Look at this. I'm going through all the parameters. Okay, so first one, 1 minute. Try doing it on your own first. Possible था क्या अभी? Should I check it once? रुको, let's check this out. Oh no, here we are in deep problem, deep soup. You know what the problem is? When I write 20x plus 50y, there's a problem here. And the problem is real. The problem is that they are not co-prime, guys. This happens only when things are co-prime. Okay, that means when you divide this by 10, so I'll have 2x plus 5y is equal to 106. Now it will be there. Wow. Clear, all of you? So, first thing first, I can take y as 2. Why? Because this is 106, this is even, this is odd. तो अगर मैं y को even करूँ तभी even आएगा. तो let me take y as 2. Now, you can also do certain things by looking at the digits. Looking at the digits. Do you understand that? You can see, look at the digits also, and that is how also you can solve it. ये, this is even, this is even, this has to be even. So y has to be at least 2. The moment I put y as 2, I get x as 48. Is that clear? Right? We need to maximize. तो x प्लस वाई यहाँ पे 50 आ चुका है, आगे इससे कम ही होगा. अब जो x होगा 5 से कम हो जाएगा 43, और y जो है वो 2 से बढ़ेगा 4. सो बेसिकली दिस इज डिक्रीजिंग बाय 5, this is increasing by 2, so overall things are decreasing by 3. So 50 is the maximum possible case. All right, got it. एक मिनट, क्या लिख रहे हो समृद्धि? हाँ, अक्षत, yes.
तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ये एक हैक जो बताना भूल गया मैं, वो ये है कि ए बी और जो आगे जो सी है दे शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। कोई भी कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, वरना तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ऑलराइट, द आंसर इज 50। गॉट इट? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? आई थिंक समृद्धि को तो पहले ही मालूम पड़ा। समृद्धि, वेल डन समृद्धि। ओके, नाउ here we were here, right? So three types of chocolates costing 2, 5 and 10. So let it be 2x plus 5y plus 10z is equal to 100. We also know that x plus y plus z is 20. अंकित जीरो वाला लेके भी कर सकते हो, जीरो काउंट नहीं होगा, तो मैंने जरूर 2 से उठा लिया, है ना? जीरो ले सकते हो, वो काउंट नहीं होगा। ओके, ये ठीक है। इफ यू bought at least one of each, how many 5 chocolates, rupees 5 chocolates did you buy? तो कोई भी चीज जीरो नहीं सकती। When it says he bought at least one of each, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन क्या हो गया? नथिंग कैन बी जीरो, एक्स वाई जेड कांट बी जीरो। ऑलराइट, 5 रुपए ने बताना है हमें कितना होगा, तो एक्स और जेड को हमें एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। ट्राई डूइंग इट ऑल ऑफ यू। कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट्स मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 2, then subtract, so x will be eliminated, right? Subtract, so this becomes 2x minus 2x is 0, 5y, 5y minus 2y is 3y, 10z minus 2z is 8z, 100 minus 40 is 60. So I got 3y plus 8z as 60. That is one equation. I need more equations to solve it. कैसे कर सकता हूँ? अभी is it 12? There can be multiple things, right? We need to check which one suits the most. Chalo, let's see. Let's check this out. So if I try to solve this one, है ना, हालांकि nothing can be zero, nothing can be zero, has to be at least one. But still, for the sake of solving, if I put this 20 and this as 0, which I won't count in future, but let me check what is going to be possible. So y decreases by 8 becomes 12, and z increases by 3 becomes 3. Y decreases by 8 again becomes 4, and z increases by 3 becomes 6. और नहीं हो पाएगा. So these two possibilities are there. All right. Are these possibilities satisfying this? देखो, y plus z, 12 plus 3 is 15, 4 plus 6 is 10. So if it is satisfying, 20 से कम होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए.
Is that clear? So if this is the value of yz, the value of x will be what? 12 plus 3 15, तो x 5 हो जाएगा, 4 plus 10 y x 10 हो जाएगा. So we have two possibilities. It can be either 12 or it can be 4. Depends on how the options will be framed. They might ask 12, 4, both, none, something like that. है ना, 5 ऑप्शन कुछ बना देंगे वो लोग और एक गलत आंसर भी देंगे. Is that clear? समझ नहीं आया अंकित? देखो मैंने बस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया तो x गायब हो गया, 2x माइनस 2x 0 हो गया. बाकी 5y माइनस 2y 3y बन गया, 10z माइनस 2z 8z बन गया, और 100 माइनस 2 इंटू 20 40 60 बन गया. उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लिया y और z के लिए. तो y का, क्योंकि 3 इज अ मल्टीपल फैक्टर ऑफ 60, y 20 होगा, z 0 होगा, बट आई विल नॉट काउंट दिस बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी एटलीस्ट 1, ये बोला हुआ है. तो 3 से शुरू किए, 3 बढ़ेगा या 8 घटेगा, तो 12 and 4 both two possibilities are there. Depends on the options वो how they ask. Next, x y z are positive integers such that, चलो बताओ. X plus y plus z is given as 20 and 3x plus 4y plus 5z is given as 75. You need to find the value of z. I'm going to start the timer. ये positive integers है. All right, Floyd. Time up. The same way we can do it. So 3x plus 4y plus 5z is 75. Multiply this thing by 3. So I'll get 3x plus 3y plus 3z is equal to 60. Then subtract it. X goes away. We'll be having y plus 2z is equal to 15. Y plus 2z is equal to 15. So we can have multiple values over here, right? If y plus 2z is 15, you can get multiple values. सब कुछ ही possible है, isn't it? If you take z as 1, y will be 13. If you take z as 2, 2 2s are 4, y will be 11 and so on. ऐसा चलता रहेगा. तो ये अल्टीमेटली कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 से लेके ये टोटल 7 तक जाएगा. कौन? z का वैल्यू. क्लियर? 7 2s are 14. ठीक है. नेक्स्ट. C correct plus wrong plus unattempted is 50 and it says correct answer है 5 मार्क्स मिल गए, wrong पे 3 मार्क्स कट गए, unattempted पे 1 नंबर कट गया, तो उसके मार्क्स आए 100. If student attempted at least 40 questions, student did at least 40 questions,
फाइंड द नंबर क्वेश्चन से आंसर करेक्टली। सी क्या होगा ये बताना है। आई एम स्टार्टिंग द टाइमर नाउ। नहीं अभी। This is a simple question, in fact. If you add these two, you'll get 6c minus 2w. ये तो कट ही गया, is 150. And it says at least उसने कितने किए हैं attempt 40. मतलब c plus w is greater than or equal to 40. That is what we have. Clear? So now we have two equations. One is this, other is this. U वाला किसी काम का था ही नहीं. Do you understand that? In the end, you might just check for verification. So you'll need more space. I'll write it here. It said 6c minus 2w. कहाँ गया? 6c minus 2w is equal to 150. It says c plus w is greater than or equal to 40. यही था ना? Yes. Attempt उसने कम से कम 40 करे हैं. That is how we need to find it out. So c and w. अब यहाँ पे ये को प्राइम नहीं है. सेम वही बात. सुरभि नहीं, क्या नाम था, समृद्धि, देखो को प्राइम नहीं है, तो 3c minus w will be 75. Now they are co-prime and now we can solve it. Clear? Is that clear? So c और w क्या हो जाएगा? अगर उसने मान लो 25 सही कर दिए तो 0 रॉन्ग होंगे. That is the first case. Rest things will increase. c increases by 1 and w by 3. Is that clear? तो c plus w यहाँ लिख लेते हैं. ग्रेटर देन 40 होना चाहिए. 25 है, यहाँ 29 है. चार चार बढ़ता रहेगा ये बार बार. चार चार बढ़ता रहेगा. ठीक है ना? So let me write unattempted questions as well. कितने क्वेश्चन थे ये पता है क्या? ये गिवन है कोई पेपर में? 50 क्वेश्चंस है. ठीक है. So total is 50. So 25, this means 25 now, right? ठीक है. 26 plus 3 78. ये 22 हो जाएगा. नेक्स्ट. कम से कम इसने 40 कर रखे हैं, है ना? कम से कम 40 कर रखे हैं. तो ये एक एक से बढ़ रहा है, तीन तीन से बढ़ रहा है, तो फटाफट पहुंचते हैं वहां पे जहाँ पे ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे. अगर मैं इसको 7 टाइम्स बढ़ा दूं, प्लस 21, 24 हो जाएगा. ये 7 कम हो जाएगा, 19 हो जाएगा. अगर मैं इसको 6 टाइम्स बढ़ा दूं, 21 हो जाएगा. ये 6 कम 20, ये थोड़ा पास पास लग रहा है. यहाँ पे आके हो रहा है ये 41 क्वेश्चंस. 20 प्लस 21 इज 41, तो अनअटेम्प्टेड 9 हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? Somebody they give me more answers, no? See, this can also be an answer. Yes.
या दोनों। हम्म दोनों बढ़ ही रहे हैं ना यहाँ पे तो। ठीक है, चार चार बढ़ रहा है ये। सो यहीं से करते हैं। 25 प्लस 24 29 प्लस 433 प्लस 437 प्लस 441 प्लस 445 ऐसे जा रहा है। ये 3 से 6 बन गया, 9 बन गया, 12 बन गया, 15 बन गया। यहाँ से 27 28 29 30, राइट। अनअटेम्प्टेड, here we'll get 5, isn't it? Here we get 9. This is correct. There'll be two possibilities, Samriddhi, not just one. One is 41, other is 45. तो करेक्ट कितने किए होंगे इसने? 29 और 30। ऑल राइट, इसके आगे बढ़ेगा? एक और बढ़ सकता है, एक और पॉसिबिलिटी है। एक एक बढ़ा दो। करेक्ट 31, रॉन्ग 18 और अनरिडन 1, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पे इसने 49 अटेम्प्ट्स किए होंगे। सो 29 और 30 और 31, दिस इज द आंसर। विल हैव थ्री डिफरेंट वैल्यूज, 29 और 30 और 31। नाइस क्वेश्चन। हाँ, अंकित क्लियर हो गया? ये करते हैं। Stamps of rupees 7, let's say he bought A stamps of rupees 7, B steps stamps of rupees 12, and C steps of 7 rupees 17। इतना हो गया है। This is 1000 and it says he has bought, हाँ, he has bought at least 10 of each type। ये तो कंफर्म है ही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले 10 को दे देता हूँ। लेट मी से लेट मी से ऐसे कि 10 उसने कर दिया है। सो 7 into 10 और 12 into 10 और 17 into 10 जो है वो उसने पूरा कर लिया ऑलरेडी। 7 + 12 17, 7 + 2 19 26, 260 रुपीज खर्च हो चुके हैं उसके। इसके बाद जो है वो ये है ABC। सो he has bought actually A plus 10 stamps of rupees 7, B plus 10 stamps of rupees 12, C plus 10 stamps of rupees 17, stamps of rupees 17। Okay, 260 is already gone, so remaining is 740। Now you can calculate जो भी आंसर आएगा उसमें 10 ऐड कर देना, थोड़ा इससे जल्दी हो जाएगा। Do you understand everyone? Clear? This will be helping us। 17 को मैक्सिमाइज करना है, मतलब 7 और 12 को मिनिमाइज करना है। ठीक है, I need more space for this। So we have 7A plus 12B plus 17C is equal to 740। यही है ना हमारे पास? ठीक है, we need to maximize the value of C, यही है ना? Alright, Aditya, yes, I said that it said ना कि 10 stamps each उसने बाय कर रखे हैं ना, तीनों के, तीनों टाइप के। तो 260 रुपीज पहले ही खर्च हो चुके हैं उसके, जो उसके बाद, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट ही हैज बॉट A plus 10 stamps of rupees 7,
B plus 10 stamps of rupees 12 and C plus 10 stamps of rupees 17. That is what I have assumed. So 260 रुपीज खर्च हो चुके हैं, तो बचे 740 और उसको हम सॉल्व करेंगे. ऑलराइट. इज दैट क्लियर? सॉल्व दिस नाउ. सी मैक्सिमाइज करना है. क्या 740 17 का मल्टीपल है? नहीं है. ऐसा होता तो मैं ए और बी को 0 0 ईच ले लेता कि 10 10 तो खरीद ही चुका है ना कम से कम वो. So everybody pay attention. A, B, C. अगर मैं ए को पहले काम करते हैं, 17 से डिवाइड करते हैं 740 को. लेट्स सी व्हाट द रिमाइंडर इज. 17 fours are 68. Right, we got 60. 17 threes are 51. We got 9 here. All right, we got 9 here. 9 बनाना पॉसिबल है कि यहाँ से? नहीं है. नहीं है. अगर मैं सी को 43 देता तो ठीक है ना. पॉसिबल नहीं है. तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 7a+12b का एक प्रॉपर सोल्यूशन आ जाए, है ना. ये हमें देखना होगा. सो वी कैन पुट डिफरेंट वैल्यूज फॉर सी एंड देन ट्राई टू चेक इट. इजंट इट? तो कैसे कर सकते हैं? We can start with one some value, some particular value, and see whether 7a+12b belongs to it or not. What if, let's say, what if I assume something. Let's say I assume C to be 40. अगर C मैंने 40 ले लिया तो क्या मिलेगा? C अगर 40 है तो 7a+12b क्या मिल जाएगा? यहाँ 40 रखो. 680. This will be 60. Do we get some values if C is 40? If C is 40, I'll get B as 5 and A as 0. That's one possibility. Right? मिलेगा ना ऐसा? 12 5 is 60. अब B की वैल्यू साथ साथ से कम होती जाएगी और कम होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो हो नहीं सकता. So 0 5 40 is a possibility. If I took C as 40, is that clear? If I took C as 40, ठीक है. 43 से ऊपर ले ही नहीं सकता मैं उसको. Let's say I take it. मैं दिखा देता हूँ सारा करके ना एक बार. डिवाइड किया तो 43 मैक्सिमम आ रहा है. So if I try to take 43, what's gonna happen? All of you pay attention to this one. If I take C as 43, then let's see what happens. So 7a+12b becomes what? We did that 40 से पहले कितना मिला था? If we take C as 43, what do we get? 43 into 17 कितना होता है? 17 4 68. 731. We get 9. That is not possible. So this case is not possible. If I take C as 42, then 7a+12b क्या मिल जाएगा? 42 into 17 is how much? 17 4 68. 34. 714. This becomes 26. Is that possible? क्या possible है ऐसा होना? 7a+12b 26 हो सकता है क्या कभी? 12 का मल्टीपल नहीं है, 7 का नहीं है. अगर a को मान लो तो वो 19 बन जाएगा. b को मान लो तो वो बनेगा तुम्हारा तब हो जाएगा. ठीक है. So we take b as 1. b as 1. So a will be 2. 7 2s are 14 plus 12. This is the maximum possible value.
42 इज द मैक्सिमम यहाँ, लेकिन 10 और थे, तो आंसर इज 52। सुरभि, आंसर इज नॉट 46, इट्स 52। इज दैट क्लियर गाइस? बहुत ही अच्छा और डिफिकल्ट लेवल का सवाल है ये, इतना सिंपल है नहीं, इतना दिख रहा है। आई होप यू गॉट दिस। इज दैट क्लियर? 42 तो है ही है, यहाँ पे आ ही गया, और वो 10 तो हमने पहले उसे बोल दिए थे खरीदने के लिए। वी हैव 52 एज अ फाइनल आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ गया करके। गलत है? नो। आदित्य पूरा लिखा करो यार, ऐसे तो पता है मैं इतनी बातें पूछता हूँ, लैब में आता है कि इसका नो का मतलब क्या था, कि आसान नहीं है, समझ नहीं आया। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। देयर आर 13 people, 12 people watching. Tell me, everyone. अरित्रो, अभी, समृद्धि, सुरभि। मैंने कैलकुलेशन शायद गलत कर दिया हो, वो अलग बात है। चेक कर लो सही किया गलत किया कैलकुलेशन। मुझे लगता है कि सही किया है। अभी सही ही है क्या होता है भाई? अरित्रो, एक मिनट, क्या बोल रही है सुरभि? कुछ बोल, समृद्धि कुछ बोल रही है। 52 अमाउंट एक्सीड्स 1000। यू श्योर? लेट्स चेक दिस आउट। हाँ, चेक करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेट्स चेक दिस आउट। So that is the case. 17 into 42 is how much? It's 714. 1 into 12 is 12. 2 into 7 is 14. If I add these, I get 740. और पहले ऑलरेडी 260 था। समृद्धि कहाँ इंक्रीज कर रहा है? नहीं कर रहा है ना समृद्धि? ये कर रहा है? कर रहा है क्या? चेक कर लो यार। वो बोल रही है तो कुछ सही सोच के बोल रही होगी। नहीं कर रहा होगा ना समृद्धि, वहीं से कोई अगर सेम इक्वेशन से चीजें सामने आई है तो थोड़ी ना इंक्रीज कर जाएगा। इज इट? What you are saying is 17 multiplied by 52 is how much? 85, 34. 884 is what you get. यहाँ पे दो मिला है, 12 थे पहले, 10 और 10 तो पहले से ही है, तो 12 इंटू 7 बिकम्स 84। और ये यहाँ पे 1 है, पहले से एक 10 थे, तो 11 इंटू 12 becomes 132. If you add them, it will be 1000 only. What's the issue? Hmm? I don't see an issue here. Do you? 116 सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आएगा तो गलत हो ही नहीं सकता ना, वो तो मैथमेटिकल फॉल्ट हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो अगला देखते हैं। लेट्स डू दिस वन। वैसे ये सवाल मुझे लगता नहीं कि आज कराना चाहिए, ये सवाल बहुत ही डिफिकल्ट। ये सवाल बड़ा बन जाएगा, कॉम्बिनेटोरिक्स का बन जाएगा।
दिस इज नॉट अ क्वेश्चन विच शुड बी डन टुडे। आई फील दैट ये करना चाहिए। बहुत लंबा हो जाएगा ये आज के लिए, मेरे को थोड़ा पीएनसी पढ़ाना पड़ेगा सवाल करने के लिए। मतलब तुम एक्स को 1 ले लोगे तो वाई प्लस जेड 14 है, तो ये 2 और 12 है ना, 3 और व्हाट 11 चलता रहेगा ऐसा। 13 एंड 1 तक जाएगा, तो 12 सोल्यूशन तो सिर्फ इसी के बन गए, इजंट इट? 12 इसके बन गए। अच्छा, कर लेते हैं। ये स्टेप 1 समझ में आ गया। जब मैंने एक्स को 1 लिया तो वाई को 2, जेड को 12, वाई या फिर वाई को 3, जेड को 11। अब अगला एक्स को 2 लोगे। अब अगर तुम एक्स को 2 ले लोगे तो क्या बनेगा? तो वाई प्लस जेड 13 बन जाएगा। 13, तो ये 3, ये 10 से जाएगा कहाँ तक? ये 12 और ये 1, यहाँ मिल जाएंगे 10 सॉल्यूशंस, इजंट इट? लुक्स गुड। हम्म। ठीक है, चलो एक बार कर लेते हैं ऐसे ही। एक्स को मैं 3 ले लेता हूँ, तब क्या होगा? वाई प्लस जेड विल बी 12, तो ये 4 + 8 से लेके जाएगा कहाँ तक? यार ये गलत हो रहा है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये 1 तक जाएगा नहीं ना। जेड बड़ा है भाई, ओहो। वेट, आई थिंक आई नीड मोर स्पेस, सो आई एम गोना इरेज दिस। रुक जाओ गाइस। ठीक है, चलो आराम आराम से करते हैं, एक एक करके। एट एक्स इक्वल टू 1, वाई विल बी 2, if x is 1, y plus z is 14, so 2 प्लस 12 से लेके 14 के लिए 6 + 8 तक जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। I'm so sorry, राइट? हम्म। तो कितने स्विच बन गए? 2 से 6, ये 5 बन गए। If now I take x as 2, then y plus z is 13, so 3 + 10 से लेके 13, 6 तक से 7 तक जाएगा। Here we have 4 solutions. All right. Now if I take x, y, z, if I take x as 3, simply कर रहा हूँ, no p and c, है ना? If x is 3, then y plus z will be 12, तो 4 + 8 12 से लेके 5 + 7 12 तक दो ही बनेंगे, यहाँ पे बात ही खत्म हो गई। Now if I take x as 4, y plus z will be 11, 5 + 6 सिर्फ एक ही बनेगा, तो 1 + 2 + 4 + 5 is the answer. 12 is the answer, the 12 possibilities. All right, this was a nice question. Very good. Got it? Next. Three friends distribute 50 coins among themselves. A gets twice as many as B. C gets at least 25. C is greater than or equal to 25. How many distinct distributions are possible? And it's known that A plus B plus C is equal to 50. Try solving it. I'll put the timer on. में से इसको तुम A को 2B रख के 3B plus C equal to 50 करके जल्दी कर सकते हो, है ना? ये एक अच्छा तरीका होगा करने का।
जितने सोल्यूशन आएंगे उतने हो जाएंगे। अगर बी का एक भी सोल्यूशन है तो ए का भी एक होगा, है ना, क्योंकि ए इज ट्वाइस ऑफ बी। टाइम अप। सो बी एंड सी, व्हाट डू वी गेट? बी कम से कम 25 है, कम से कम। अच्छा, दिस थिंग इज इवन, तो दीज टू शुड आइदर बी ऑड और इवन, है ना। तो सी को अगर मैं 25 ले लेता हूँ तो 3 भी 25 होगा, नॉट पॉसिबल। अगर मैं 26 लेता हूँ तो 3 भी 24 होगा, इट इज पॉसिबिलिटी, दिस बिकम्स 8, राइट। नाउ सी विल डिक्लाइन बाय 3 यूनिट्स एंड बी विल ग्रो बाय 1 यूनिट, राइट। सी को ग्रो कराना है हमें यहाँ पे ना, ठीक है। 3 से बढ़ाते हैं 29, तो एक कम हो जाएगा। ऐसे करते 8 7 करके कि 1 पहुंच जाएगा, एक टाइम पे 1 आ जाएगा ये। देयर आर 8 सॉल्यूशंस, आंसर इज 8। Like B can take 8 7 6 6 5 4 3 2 1, because C is anyways increasing, we don't really count C। B पे लिमिटिंग फैक्टर आ गया है कि जो कॉइन से कभी यहाँ पे मतलब कम से कम एक तो होगा ही, तो आंसर इज 8। सी का एटलीस्ट 5, मैं 25 से काउंट कर रहा हूँ, पर 25 से करने पे ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 8। तो 5 से भी कर लो, 5 से कितना हो जाएगा? हो जाए, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। 5 से कर लेते हैं, 5 + 3 8 एंड सो ऑन। तो अगर ये 5 है तो ये तो बी तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। अगर सी 6 है तब भी नहीं होगा, अगर 7 है तब भी नहीं होगा, 8 है तब हो जाएगा। इफ सी इज 8 देन इज 42, बी इज 14, राइट। इज दैट क्लियर? नाउ इफ बी सी grows by 3, बी declines by 1, 14 से लेके 1 तक जाएगा, तो आंसर इज 14। देयर बी 14 सॉल्यूशंस, क्लियर। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? आंसर इज 14। Who all are present? Tell me that. Tell me this. I can see people are dropping off. Only 7 people are present now. Uday is present, Arithro is present, Avi is present, Aditya is present. 4 तो मुझे पता चल गए, और कौन है? 14 solutions। ठीक है, काम करते हैं, इतने पे रोकते हैं। We are done with lot of Diophantine equations and linear equations. It's clear now. Nothing is left. We did so many types. Tell me something, who were watching from the first moment. I think it was Avi who is still there. Right, Avi? Probably you must not have done these many questions, combined all the classes that you've taken till now. These many type of questions in one single class. We've done a lot, right? तो एक काम करते हैं, मैंने बनाए थे 50 सवाल, 26 करा लिए हैं, 24 बचे हैं। क्या मैं इसे होमवर्क शीट में डाल दूं? होमवर्क में डाल ही रहा हूँ उसमें 50 50 सवाल। उतना लोग कर तो रहे नहीं है मुझे लगता है। 24 क्वेश्चन होमवर्क। वो स्वस्तिका, यू आर देयर, है ना। होमवर्क शीट बन जाएगी आपकी 24 क्वेश्चंस की। देखो, बहुत ही ब्रिलियंट टाइप के क्वेश्चंस है, समझ में आ ही गया होगा। इतने सारे सवाल करने में कुछ बचेगा नहीं। जो सेट फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज लॉजिकल कंडीशंस, सी जितना कुछ हो सकता है
इक्वेशंस में, और मैं क्वाड्रेटिक पे गया ही नहीं हूँ। मैंने हर टाइप के, और सेट 5 है एडवांस कॉन्सेप्ट्स इन हाई डिफिकल्टी लेवल। ये देखो, सवाल देख रहे हो, अलग ही लेवल का सवाल है, दिख ही रहा होगा, है ना। जो कुछ हो सकता है सब मैंने डाल दिया है, इसके बाहर तो वो क्या ही पूछ लेगा। You know what? I would tell you something. I don't think that I have done better questions than this in my entire life in a single class. That is what even I feel. And because now I'm free, it's my own institute, so I can do it the way I want to. I want to ask you, ये तरीका मैं जो अपना रहा हूँ, तुम लोग देख ही रहे हो पिछले कुछ दिनों से। मतलब कैट में तो हमने रैंडम किया, अब जैट में ऑर्गेनाइज्ड है। तो इज दिस वे मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, और वही हर सवा 2 घंटे क्लास में 10-10 सवाल करें और आ जाए एग्जाम में कुछ और मॉक हो ही ना, वो करना है क्या? दिस इज अ बेटर वे, दिस इज व्हाट आई बिलीव। आई जस्ट वांट टू टेक अ फीडबैक, व्हाट डू यू गाइस थिंक? बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं उधर, करना ही है, डिस्कस करना ही है। मैं अभी, मेरा प्लान ये बन रहा है कि मैं जो क्लासेस है ना, जो 2-2 घंटे क्लासेस हैं, उनमें कुछ क्लासेस रखूंगा प्योर डाउट सेशन। ठीक है। ये आदित्य, दिस वन इज फार बेटर। Yeah, Ankit. So, and also one more feedback, um, because now after this, you guys will become seniors. The next batch for 2026 CAT will come. Do you think that this is the way I should even conduct for CAT 2026? What do you think? हाँ, तो इतनी पहले 45 मिनट्स तो कॉन्सेप्ट ही किए थे आज भी। For CAT 2026, do you think I should follow the same kind of pattern? 30 minutes concepts, and then kind of a full throttle brute force sort of questioning, कि 2 घंटे क्लास में 20 से 25 सवाल, तो 20 से 25 सवाल हो जाए। गुड फॉर कैट एज वेल। समृद्धि, समृद्धि का प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं। समृद्धि बार बार बोल रही है। समृद्धि, तुम क्या कह रही हो? 132 प्लस? समृद्धि, रुको, चेक कर ही लेते हैं। कैट इज अनप्रिडिक्टेबल, यस दैट्स राइट। एंड ऑल्सो वन थिंग, अभी मेरे को ना अरित्रो नहीं, अरित्रा का फोन आया था। अरित्रा वाज सेइंग, सर एक बार आप LRDI पूरा सॉल्व कर दो और वीडियो बना दो, हमें सिखा दो, मतलब बेसिकली कि, और आपको क्या लगता है कि LRDI लोगों को खराब क्यों हुआ है? क्या वो इसलिए हुआ है, ये कुछ नया ही आ गया, या ऐसा था कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है पहले? मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, से ही वांट्स टू नो दैट। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना कल संडे को, बिकॉज संडे का डोंट हैव अ क्लास, इट विल टेकन बाय दीप शिखा, सो आई थिंक आई विल डू दैट। तुम लोग को लगा कुछ ऐसा? यस अंकित, या अभी कितना कितना आया था, मैं भूल गया हूँ, कितना कितना था? 12 into कितना था ये? 11 था, 11 था ना? एंड दिस वाज हाउ मच? 12, राइट? 84, 132, लेट्स काउंट इट। बात तो तुम सही कह रही है, 1100 क्रॉस हो गया है। मतलब कोई ना कोई बीच में एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, समृद्धि, चेक कर लेंगे उसको।
No, but this YouTube is not public. This is as good as Zoom. Um, Rasun. It doesn't really matter. If we want it in Zoom, we can do it in Zoom. Not a problem. In the end, I'll have to upload the classes on that medium. I use YouTube because that is probably easy for all the people to just click and go there. If I do it on Zoom, so if you guys are comfortable with Zoom, we can do on that. Not an issue. Yeah, that's right. चलो I'll do some research on LRD and try to अभी पूरा एक साल है मेरे पास. I would like to. I'll take some time. I'll take 5 to 6 days of a break. वो possible नहीं है, but I want to kind of go into deep thought that what is coming to the mind of cat paper setters that they're creating such sets with LRDI. हम्म. तो इस क्वेश्चन में क्या समृद्धि 46 ही आ रहा है क्या? I might have messed up some calculation. Just you guys can check it once, okay? All right, then अगर मैं चेक कर लूँगा सोल्यूशन उसका फिर डाल दूंगा. जो वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ ऐप पे वो कर दूंगा. अच्छा, एक चीज सवाल जो पूछा मैंने, जूम पे ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल? यस और नो कुछ तो बोल दो. हम्म. ऑल ऑफ यू नो. ठीक है, वो कर लूंगा मैं. आई डू दैट देन. कूल, ओके. सो tomorrow's class will be held on Zoom then. हाँ, जूम पे वही बात है कि लैग नहीं है ना. प्रॉब्लम एक अच्छी बात क्या है, यूट्यूब में इजी क्या है कि इट्स एक्सेसिबल टू एवरीवन. जूम में अच्छी बात क्या है कि देयर इज नो लैग. सो बेसिकली यू गाइस कैन जस्ट आस्क अ क्वेश्चन. वैसे भी क्लोज्ड कोहॉर्ट है, तो उसका मतलब ये था कि हर किसी का पर्सनल अटेंशन चला जाए. और आई थिंक वो भले क्लास का टाइम में कुछ भी कर लूँ, मैं देख रहा हूँ क्लास के अंदर 12 से 15 से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, है ना. वो भले वहाँ पे देर आर 60 people, they prefer watching recordings. So if 20 to 50 people are there, I think Zoom is the best. शायद कल स्नैप पे इसलिए भी हो सकता है, कल के बाद अटेंडेंस बढ़ जाए परसों से. दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बट लेट्स सी. ओके देन, टेक केयर ऑल ऑफ यू. गुड नाइट. I'll upload this video and the remaining homework and any hacks over there. अच्छा, एक चीज़ और, उस ऐप पे क्या जो मैंने आज क्विज अपलोड करी है वो दिख रही थी? क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको अच्छे से? क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस. दिख रहे हैं? चलो ठीक है. Then, good night. Didn't check yet. Schedule after the session is over. सेशन ओवर होने के 2 से 5 घंटे बाद मैं ना उसमें वो डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, होमवर्क. तो तुरंत उसे होमवर्क कर लो. और तुम्हारे पे सबके पास मॉक का डैशबोर्ड का एक्सेस है ही है. वहाँ पे एरिया टेस्ट है. So have you saw the percentage quiz? Then it's okay.
बस वो सॉल्व करते रहो. You just have to do the class and solve as many questions as possible. That is the only schedule, nothing else. ठीक है, चलो, बाय, टेक केयर.